Did you know you needed medicine? क्या आपको पता है आपको दवा की जरूरत है? Or you're already cured? क्या आप पहले ठीक हो चुके हैं? This base is too that's better. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Srivas, little less volume. थोड़ा कम कीजिए आवाज. Little more trouble. Not trouble, trouble. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janvalabha Jaya Jaya
Chaitanya Mahaprabhu ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gurudeva ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gaura Premanande. Jayom Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacha Śrīmad Govinda Swami Śrīla Gurudeva ki. Jayom Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacha Śrīmad His Divine Grace Śrīla A.C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki. Jayom Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacha Śrīmad His Divine Grace Śrīla Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Śrīla Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Nam Acharya Śrīla Haridas Thakur ki. Ramsikoho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasudeva Shri Gaura Bhakta Vrinda ki. Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakund Radhakund Giri Govardhana ki. Jai Shri Vrindavan Dham ki. Jai Shri Mayapur Navadvip Dham ki. Shri Kshetra Jagannath Puri Dham ki. Ganga Maya ki. Jamuna Maya ki. Bhakti Devi ki. Tulasi Maharani ki. Shri Shri Gaurnitai ki. Shri Shri Krishna Balaram ki. Shri Shri Jagannath Baladev Lady Subhadra Devi's ki. Shri Shri Radha Gopinath ki. Shri Shri Radha Gopal Ju ki. Shri Shri Radha Madhava ki. Samaveda Bhakta Vrinda ki. Rantaraj Śrīmad-Bhāgavatam ki. Premanam Sankirtan Jagya ki. Transcendental book distribution ki. Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru, Shri Gauranga Mahaprabhu, Srila Prabhupada, Srila Gurudeva. Hare Krishna. You're very fired up today. You're enthusiastic. आज आप पूरे जोश से भरे हैं, बहुत उत्साही हैं। That's a good sign. बहुत अच्छा संकेत है। I feel very fortunate to have your association this morning. मैं खुद को बहुत भाग्यवान मानता हूँ। मैं आज सुबह आपका मुझे संग प्राप्त हो रहा है। Most of you. ज़्यादातर। That's bad, right? What are you sitting up there for? आप वहाँ क्यों बैठ रहे हैं? Huh? Who told you to sit up there? Krishna or Maya? आपको वहाँ किसने बैठने को कहा? कृष्णा ने या माया ने? Get over here. आप यहाँ आइए। What are you doing? वहाँ क्या कर रहे हैं? You're going to see why? Because you're tall, you don't have to sit down? Is that the idea? आप लंबे हैं इसलिए आप नीचे नहीं बैठेंगे, ये आपका विचार है क्या? I can't sit for long. Huh? What? I feel Tapodivyam? Asa basa asa. I remember when I first came also, I was not used to sitting like that. मुझे याद है जब मैं भी पहली बार आया तो मैं भी इस तरह मुझे बैठने की आदत नहीं थी। And it was very painful बहुत दर्दनाक था। if you're not used to that. अगर आपको आदत नहीं है इसकी। And then like a burning, you know. और जलता था मुझे। So that's good. तो ठीक है, अच्छा है। If it gets too much, then a little bit stand. अगर जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा But at least try, कम से कम प्रयास कीजिए। right? Get some purification. थोड़ा शुद्धिकरण होगा। You'll hear a lot better sitting down. आप ज़्यादा बेहतर सुनेंगे जब आप नीचे बैठेंगे। Somehow it's like a humble position, and that's how we should hear Śrīmad-Bhāgavatam. इसी तरह ये एक विनम्र स्थिति है, इस तरह से श्रीमद् भागवतम में But he's श्रवण करते special, he's unique because he's tall Indian body. हैं। लेकिन ये थोड़ा स्पेशल है, विशेष है, अनोखे हैं क्योंकि ये लंबे भारतीय He's हैं। used to like looking down on everybody, you know what I mean? ये बस हमेशा नीचे देखने की इनको आदत है, Physically. शारीरिक रूप से। Hare Krishna. My Gurudev many times said, pray for the power of tolerance. मेरे गुरुदेव कई बार कहा करते थे, सहिष्णुता के लिए प्रार्थना कीजिए। And I didn't understand that when he first said that, because I thought, okay, just be tolerant. पहली बार जब उन्होंने कहा मैं समझ नहीं पाया उनकी बात, मुझे लगा ठीक है सहिष्णुता होना है। But what if you run out of your level of tolerance? लेकिन क्या होगा जब अपना सहन शक्ति खो देंगे आप? And then the situation becomes way more than what you can tolerate. और परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप सहन नहीं कर पाएंगे। Then where will you get the extra ability to tolerate? तो आपको और अधिक क्षमता कहाँ से मिल पाएगी? सहिष्णुता And be होने की? peaceful enough.
और आप शांत भी हो पाएं। So then I understood, oh, this is pray for power of tolerance, some kind of special power that will come and give you some strength. तब मुझे समझ में आया ये है अपने सहिष्णुता के लिए प्रार्थना करना, मतलब कुछ विशेष शक्ति आपको प्राप्त होगी ताकि आप उस समय में उसको सहन कर पाएं। We all think we're tolerant and patient until we have to be tolerant and patient. हम सब सोचते हैं हम बहुत सहिष्णु हैं, हम बहुत धैर्यवान हैं, लेकिन असल जब समय आता है सहिष्णुता का और धैर्य का तब हमें Then we realize it's mostly like a theoretical or like a wishful thinking. तब हम सोचते, तब हमें पता चलता है कि हम बस असल में कल्पना ही I'm करते very हैं। tolerant, very patient. मैं बहुत सहिष्णुता हूँ, मेरे अंदर बहुत I'm not demanding any respect from anybody. मैं किसी से कोई आदर नहीं मानता। Then somebody looks at you wrong, you're like, hey, what's your problem? You know, don't you know who I am? और कोई हमारी तरफ गलत तरीके से देखता है, हम कहते हैं तुम जानते नहीं मैं क्या हूँ, कौन हूँ? I'm great. मैं महान हूँ। Grantaraj Śrīmad-Bhāgavatam ki. You ready to get some mercy? आप तैयार हैं कुछ कृपा पाने के लिए? You can't be proud though. आप अहंकारी नहीं हो सकते, लेकिन If you're proud, puffed up, then you can't get mercy. आप अहंकार में है, मद में है, तो आपको कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। We're either going to get humbled or we're going to humble ourselves. या तो हम विनम्र हो जाएंगे या हमें विनम्र बना दिया जाएगा। So better we try to humble ourselves. At least Krishna, okay, they're trying to humble themselves. कम से कम हमें स्वयं खुद को विनम्र बना लेना चाहिए। कृष्णा देखेंगे हम प्रयास कर रहे हैं कुछ विनम्र होने का। But if we're not like that, then we're going to get humbled out, definitely. लेकिन अगर हम ऐसे नहीं हैं तो हमें विनम्र बना दिया जाएगा अवश्य। Everyone will be horizontal by the end, अंत में एक दिन सभी को पूरा लेट जाना है। either voluntarily or involuntarily. We'll all be horizontal. स्वेच्छा से या अपनी इच्छा से नहीं भी, एक दिन सबको लेटना है। You ready? तैयार हैं आप? Narayanam namaskritya नारायणं नमस्कृत्य Naram chaiva narottamam Devim saraswatim vyasam देवीं सरस्वती व्यासं Tato jayam udiraye मुदीरये Vede ramayane chaiva Purane paraḥ Adavante chamadye cha Hari savatra giyate Mukam karoti vachalam Pangum langayate giri Yat kripa tamaham bande Shri Gurum dinatarane Paramananda madhavam Paramananda he madhava Pandunga luchi makaranda Se makaranda anakari Anande bolo Hari Hari Hari-katha name banda bela Hari-katha rive chakadola Se chakadolanka payare Manamo rahu nirantare Mano nirantare rahu Ha Krishna bali jiva jao Ha Krishna bali jahu jiva mote udhara radha dava mote udhara radha dava mote udhara radha dava dharma prochita kaitavo cha paramo nirmatsaranam satam Vedyam vastavamatra vastu shivadam tapatrayan mulanam Śrīmad-Bhāgavate Mahamuni krite kimva pareśvara Sadyo hridya varujate chakritivi shushushivitachanat Nigama kapitaro galitam palam shuka mukadam ritatavyasam Vivata Bhāgavatam rasam halayam muhu aho rasika bhuvi bhavakaha Anato pasamam shakshat bhakti yogam adhokṣaje Lokasya janato vidvams chakre sattvat samhitam
Yasham Vasyamanayam Krishna Paramapurushe Bhaktu Padyate Puṁsāṁ Shokamoha Bhayapaha Śrīmad-Bhāgavatam Purāṇam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam Yasmin Paramahamsam Makam Amalam Yanam Param Giyate Tattva Jnana Varagya Bhakti Saitam Naskam Yama Vishkitam Tashin Vansupatan Vacharana Paro Bhaktiḥ Nara Ato Yam Vamasucharam Hari-katha Krsna-katha Gayatri Vashurupo So Vedata Paribrahmita Sarva Vedetihasanam Saram Saram Samudritam Sarva Vedanta Saram Śrīmad-Bhāgavatam Ishyate Tadrasam Nitachittasya Nanyatadrataki Krachit Krishna Bhakti Rasa Swarup Shri Bhāgavata Tate Veda Shatohate Parama Mahata Chari Veda Upanishade Jata Kicho Haya Tarata Lanavyasa Karila Sanjaya Yeshu Tayeru Misaya Vachana Bhagavate Seru Soke Nibandana Jivera Nistara Lagi Suprakalya Vyasa Mayavadi Bashishunile Ayasa Vanasha Jaho Bhāgavata Pada Vaishnavira Stane Ekanta Shayakara Chaitanya Charane Bhāgavata Purāṇa Seyavana Sama Tarasasta Janme Janme Prabhuyama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Grantaraj Śrīmad-Bhāgavatam ki. So again, we need to keep hearing because we have tendency to forget. तो हमें निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है भूल जाने की. Before you would hear from pure devotee, you'll be pure immediately. You'd hear it by mercy, you'd understand it, and then you'll realize it. तो शुद्ध भक्त से श्रवण करने से पहले हमें थोड़ा शुद्ध होना पड़ता है ताकि उनकी कृपा से हम समझ सकें उस बात को. But in Kali Yuga, we don't have very much qualification because the most sinful age. लेकिन कलयुग में हमारे पास बहुत ज़्यादा योग्यता नहीं है क्योंकि ये बहुत पतित युग है. So many sinful desires are there, बहुत सारे पाप कर्म इच्छाएं हैं, and so much sinful reaction is there, बहुत सारे पाप के फल हैं, like a Himalayan mountain. हिमालय पर्वत के जैसा. You cannot count how many sinful activities we're doing, not only in this life, but many lifetimes. हम गिन नहीं सकते हमने कितने पाप कर्म किए, ना तो सिर्फ इस जीवन में बल्कि पिछले कई जन्मों में. So there's a lot of filth is there, contamination is there, बहुत सारी गंदगी, बहुत सारा कलमस है यहाँ, a lot of ignorance is there. बहुत सारा अज्ञान है. It says Krishna is like the sun.
कहते हैं कृष्णा है सूर्य के जैसे, He's the purest of the pure. वो शुद्धता में भी शुद्ध हैं। And Prabhupada said the sun can purify even most contaminated nasty place. प्रभुपाद कहते हैं सूर्य जो है सबसे गंदे और कलमस वाले जगह को भी शुद्ध कर सकते हैं। Prabhupada said you cannot purify yourself. प्रभुपाद कहते हैं आप स्वयं को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। Oh, I'm trying to purify myself. मैं अपने आप को I'm शुद्ध trying करने to का प्रयास कर रहा हूँ। control my mind and my senses. मैं अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर I'm रहा trying to develop transcendental knowledge. हूँ। मैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर I'm रहा हूँ। fighting with the Maya. माया के साथ लड़ाई कर रहा हूँ। How's possible? कैसे संभव है? Only thing is to desire that, yes, I'm in trouble. सिर्फ एकमात्र इच्छा करनी है कि मुझे समझना है कि मैं मुसीबत में हूँ। Right? Heart, mind, consciousness completely polluted, disturbed. हृदय, मन, चेतना पूरी तरह परेशान है, पूरी तरह कलमस से भरी हुई है। Filled up to the brim ऊपर तक भरा है with the filth. गंदगी से। It says if you go to Ganges, you get some pot and you go, right? And you pick up the Ganges water, the mercy, right? ऐसा कहते हैं आप कुछ घड़ा लेकर गंगा का जल लेने जाएं ताकि आप कुछ कृपा प्राप्त कर सकें। But if you go there and the pot is completely filled to the top with the mud, how you pick up the water? और अगर आप बर्तन लेकर जाएंगे जो पूरी तरह ऊपर तक की कचरे से भरा है तो आप कैसे गंगा का जल लेकर आ सकते हैं? Right? Even Jesus said, "Empty your heart, then I'll fill you." यहाँ तक कि जीसस ने कहा अपने हृदय को साफ खाली करो तब मैं उसको भरूंगा। So my Gurudev many times said, if you're intelligent and wise and honest person, you'll realize my heart and mind conscious is completely filthy and disease condition. तो मेरे गुरुदेव अक्सर कहा करते हैं अगर आप बुद्धिमान चतुर हैं तो आप समझ पाएंगे मेरा हृदय, मेरा मन, मेरी चेतना पूरी तरह गंदगी से भरा है और मैं बीमार अवस्था में हूँ। Prabhupada said it's very natural to be attracted to your father. प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत स्वाभाविक है अपने पिता की तरफ आप आकर्षित हों। Generally, सामान्यतः unless he's some incredible demon. अगर वो कोई विशेष असुर ना हो। But even still they're attracted to the father. फिर भी वो लोग अपने पिता से आकर्षित होते हैं। So Prabhupada says, so Krishna, he is the supreme father, seed-giving father of all living entities. तो कृष्ण सभी जीवात्माओं के बीच प्रदाता पिता हैं। So it's very natural to be attracted to Krishna because he's seed-giving father. ये बहुत स्वाभाविक है अपने बीच प्रदाता पिता कृष्ण के तरफ आकर्षित होना। But how is it that we're unnaturally unattracted to the most attractive personality? तो ये कैसा है कि हम इतने अस्वाभाविक रूप से अनाकर्षित हैं जो सबसे ज़्यादा आकर्षित व्यक्ति हैं। And we have little to no real strong enough attraction or desire. और हमें थोड़ा सा भी उनके तरफ आकर्षण नहीं है, We इच्छा must नहीं be है। honest about that. तो हमें इसके प्रति No, ईमानदारी I'm रखनी चाहिए। senior devotee. I love Krishna. I have so much bhakti. Right? This is all sentimental. It's illusion. It's not real. और मैं बहुत वरिष्ठ भक्त हूँ, मैं बहुत एक ईमानदार भक्त हूँ, गंभीर भक्त हूँ, मुझे कृष्ण की तरफ भक्ति है, प्रेम है मुझे कृष्ण से, ये सब भावपूर्ण है My बस। Gurudev say you're supposed to cry for Krishna. You're not crying for Krishna. मेरे गुरुदेव कहा करते हैं आपको कृष्ण के लिए रोना है, आप कृष्ण के लिए नहीं रो रहे हैं। You're crying for Maya, or that you have to give up Maya. आपको माया के लिए आप माया के लिए रो रहे हैं जबकि आपको माया छोड़ना है। So they said, Gurudev, what to do? You know, we're not crying for Krishna. We're crying for Maya. तो कई बार भक्त कहा करते थे गुरुदेव मैं क्या करूँ, मैं माया के लिए रो रहा हूँ। So many times Gurudev said you should cry because you can't even cry. What it takes to get Krishna, you can't even do it. मेरे गुरुदेव कई बार कहा करते तुमको रोना है क्योंकि तुम रो भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि जो तुमको कृष्ण को प्राप्त करने के लिए चाहिए तुम वो भी नहीं कर पा रहे। That's like a pitiful situation. ये बहुत दयनीय स्थिति है। And then many times people ask Gurudev, well, what do you do if Gurudev said if you cry for Krishna, Krishna will say, oh, this soul's crying for me. I have to reveal myself to him. तो गुरुदेव कहा करते थे अगर कोई कृष्ण के लिए रोता है तो कृष्ण उसको देखेंगे और कहेंगे कि ये मेरे लिए रो रहा है तो मुझे इसको अपने सामने प्रकट करना होगा। And then one time someone said, well, Gurudev, what do you do if you can't cry for Krishna? एक भक्त ने एक बार पूछा गुरुदेव कि अगर कैसा होगा मैं कृष्ण के लिए रो नहीं पा रहा। And Gurudev said, it means you're not serious. तो गुरुदेव ने कहा इसका मतलब तुम गंभीर नहीं हो। Right? Who gets the mercy we're reading other day are those who realize, oh, I'm in a big problem. I'm in a trouble. I'm suffering here. I got to get out of this situation. I got to solve this problem. तो हम कल पढ़ रहे थे कृपा किसको प्राप्त होती है, जो ये समझ पाता है कि मैं बहुत दुखमय स्थिति में हूँ, मैं यहाँ कष्ट भोग रहा हूँ, मुझे इस परिस्थिति से बाहर आना होगा। Gurudev said if you're honest and you can realize this thing, then there's hope for you.
तो गुरुदेव कहा करते थे अगर आप इसके प्रति ईमानदार हैं, आप इसका साक्षात्कार कर पा रहे हैं, तो आपके पास कोई उम्मीद है। But if we think I'm fine, I'm advanced, I've understood everything, then we're out of touch with the reality of the situation. लेकिन अगर हम सोचेंगे हम अच्छे हैं, हम बहुत उन्नत हैं और हम सही स्थिति में हैं, तो हम अपने वस्तु की सच्चाई से परे हैं। One time one Prabhupada disciple, godbrother, was asking Srila Gaur Govinda Swami in the Mayapur temple. एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज से मायापुर मंदिर में एक सवाल पूछ रहे थे। And he said, yes, Maharaj, now that we're so well situated, तो उन्होंने कहा महाराज अब ऐसा है कि हम अब सही स्थिति में अब आ चुके हैं। and he started asking a question. और फिर उन्होंने सवाल पूछना शुरू And किया। the Gurudev said, you're well situated? तो गुरुदेव ने उनको रोक के कहा, Do you feel yourself हैं? well situated? आप सोच रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति में हैं। So this is like a shocking way to respond, right? तो बहुत आश्चर्यचकित उनको प्रतिक्रिया Now मिली। that we're well situated, are we that well situated? मैं अच्छी स्थिति में, उनको लगा मैं अच्छी स्थिति में हूँ। Uncontrolled mind and senses? Haunted by ghosts? अनियंत्रित मन और इंद्रिय है और भूत का साया है, ऐसा है। Right? They used to have this guy in Orissa, right? The Ghostbuster. उड़ीसा में एक व्यक्ति था जो भूतों को पकड़ता था। He used to travel around and get rid of everybody's ghosts. वो अलग-अलग जगह सफर करता था और सबके भूत निकालता था। He had one ashram in Orissa. उसका एक आश्रम भी है उड़ीसा में। We used to call it Pagala Ashram. उसको पागल आश्रम कहते हैं। Because all the crazy people haunted by the ghosts, they go there, and this guy had all the ghosts in these different bottles, you know. क्योंकि वो सारे लोग जो भूत की वजह से पागल हो गए थे, इनके पास जाते थे और ये भूत निकाल के उनको बोतल में बंद करके रखता था। So he used to travel around ISKCON. He'd make the circuit, you know. तो वो ISKCON के अंदर ऐसे घूमता था अलग-अलग जगह पे। The traveling Ghostbuster circuit. जो याद सफर करता हुआ भूत निकालने वाला व्यक्ति था वो। And many gurus, sannyasis, they're calling for him, you know. Why are you calling for this guy, you know? और बहुत सारे गुरु सन्यासी उसको बुलाया करते थे अपने वहाँ। And then you say, yes, Maharaj, you have like 9 ghosts, you know. फिर वो महाराज को कहता था, महाराज आपके अंदर 9 भूत हैं। And then like, can you get rid of them for me, you know? फिर वो महाराज को पूछते थे क्या मेरे अंदर से बाहर निकाल सकते हैं उनको? You chant pure holy name, Krishna, you know, the ghosts will run away, isn't it? आप शुद्ध नाम जप कीजिए, कृष्ण का भूत वहाँ से भाग जाएंगे। You have to call some wizard from the Pagala ashram to get rid of your ghosts, you know? आपको कुछ पागल को बुलाने की जरूरत है पागल आश्रम से आपके भूतों को निकालने के लिए। Something's not right there, you know? वहाँ पे कुछ चीज़ सही नहीं हो रही। I don't know. I don't want to criticize anybody, but I don't remember Prabhupada saying like this, you know? मैं किसी पे दोष नहीं निकालना चाहता, लेकिन मुझे ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा प्रभुपाद ने कहीं ऐसी बात कही हो। But Krishna says all of these doubts, you're haunted, material desire, material attachment, mental speculation, right? All of this is like a demons. प्रभुपाद बताते हैं ये सारी भौतिक इच्छाएं, भौतिक आसक्ति, हम अपना We're मनोधर्म, being harassed. इससे हम बहुत ज़्यादा हमेशा प्रताड़ित होते रहते हैं। ये असुर के जैसे हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं। This is all sinful desires, all sinful reactions because of this thing. ये पाप में इच्छा, पाप कर्म का फल हमें मिल रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। So Krishna says, if you surrender to me, then I'll destroy your sinful desires and your sinful reactions. तो कृष्ण कहते हैं अगर आप मुझे शरणागत करेंगे तो मैं आपके सारे पाप कर्म के इच्छाओं और पाप कर्म के फलों को नष्ट कर दूंगा। Prabhupada said, the only thing a soul can do is desire. प्रभुपाद कहते हैं एकमात्र चीज आत्मा कर सकती है इच्छा करना। So do we desire to clean ourselves up and fix ourselves up really and get out of trouble? तो हम इच्छा कर रहे हैं अपने आप को सही करना, अपने आप को शुद्ध करना और समस्या से बाहर आना असल में, And get free from all this mental speculation and harassment by Maya? और इस मनोधर्म से हम मुक्ति पाना चाहते हैं जो हमें हमेशा परेशान की हुई है माया By से, the demons of doubt? और ये असुर हैं हमारे जो संदेहों के असुर हमारे अंदर हैं। Those who really want to solve it and get out, they get mercy. जो असल में इसको समझते हैं, इससे बाहर आना चाहते हैं, वो कृपा के पात्र होते हैं। So that is up to us. तो ये हमारे ऊपर है। So Krishna, how do I surrender to you? कृष्ण मैं आपको कैसे शरणागत करूं? Just like Arjuna, he said, I admit my defeat, it's not working, I can't do anything spiritually or materially. जैसे अर्जुन ने अपनी हार स्वीकार की, उसने कहा मैं ना कुछ भौतिक रूप से कर पा रहा हूँ, ना आध्यात्मिक रूप से कर पा रहा हूँ। Can't control this mad mind and senses, it's like trying to stop a cyclone, it's impossible. मैं अपने पागल मन इंद्रिय को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चक्रवात को नियंत्रित करना है। Because Krishna says, Mama Maya, it's my Maya. क्योंकि कृष्ण कहते हैं मम माया, मेरी माया है। So we don't want to surrender to Krishna, Krishna is the witness and judge, and it's okay, Maya, take care of that person. तो अगर हम शरणागत नहीं करना चाहते तो कृष्ण उसके न्याय करता है, कृष्ण उसके गवाह हैं, तो वो माया को कहेंगे इसको Punish them. इनको दंड दीजिए। Get them to cooperate.
इनको सहयोग करने के लिए मदद कीजिए, force them. इनको जबरदस्ती That's मजबूर also कीजिए। that's also mercy. ये भी कृपा है, Otherwise, we'll just keep going on like that. वरना हम ऐसे ही जारी रखेंगे अपना जीवन। So the punishment has to be so heavy that we admit our defeat. तो दंड हमारे ऊपर इतना ज़्यादा होना चाहिए कि हम अपनी हार स्वीकार कर लें। There is no life, there is no peace of mind unless we genuinely try to surrender to Krishna. कोई जीवन नहीं, कोई शांति नहीं है अगर हम कृष्ण को शरणागत नहीं करेंगे। Then we have free will, we can choose to do that or not. और हमारे पास ये आज़ादी है, हम ये करना चाहते हैं या नहीं। If we're convinced by Krishna, Guru Sadhu Shastra, and we're desiring to surrender, Krishna will know it, he'll mark it. अगर हम आश्वस्त हुए हैं गुरु कृष्ण के माध्यम से जो प्रस्तुति दे रहे हैं और हम इच्छा कर रहे हैं उनको शरणागत करने की, And then Krishna उसको says, देखेंगे। I'll give you intelligence, inside, out, through the Guru, to the Shastra, to Śrīmad-Bhāgavatam. और कृष्ण हमें बुद्धि देंगे गुरु साधु शास्त्र से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम I'll से। explain everything to you step by step. वो कहते हैं मैं तुमको क्रमानुसार सब कुछ बताऊंगा। First, purify you so then you can hear the instruction and understand it. पहले तुमको शुद्ध करूंगा ताकि आप मेरे निर्देशों को सुन सकें और समझ पाएं। Without purification, getting free from all these demons and doubts and ghosts, everything, right? Then how can we hear anything and understand anything? बिना शुद्धिकरण के इन इच्छाओं से, आसक्तियों से, हमारे मनोधर्म से और भूतों से छुटकारा पाए बिना हम कैसे इसको Those who become simple, pure-hearted, they can hear. जो सरल और शुद्ध हृदय वाले हैं वो सुन सकते They हैं। can get the effects and benefits of that hearing, उनको श्रवण का प्रभाव भी दिख सकता है and they can develop faith. और फिर वो श्रद्धा प्राप्त कर सकते हैं। Well, I'm trying to develop my faith. वो मैं श्रद्धा विकसित करने By का प्रयास कर listening रहा to हूँ। Maya, you're trying to develop your faith. माया को सुन के आप श्रद्धा विकसित करने का प्रयास Guru, कर रहे Sadhu, हैं। Shastra, Krishna telling you like, oh, should I accept this? You know, और गुरु साधु शास्त्र जब वो बताने का प्रयास करें तो आप सवाल उठा रहे हैं, क्या मुझे इसको स्वीकार करना I'm चाहिए? doubtful, I'm skeptical, I'm suspicious, right? वहाँ हम संदेह करते हैं, वहाँ हम बचने का प्रयास करते हैं, कुछ न कुछ दोष दिखने का प्रयास करते हैं, संदेह I करते have to be careful, I have to protect myself. हैं। मुझे सावधान होना चाहिए, अपने आप का रक्षा करना चाहिए। That means we're not trusting Krishna. इसका मतलब हम कृष्ण पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। We're still thinking we're our own protectors. हम अभी भी सोच रहे हैं हम अपना रक्षा स्वयं कर सकते हैं। So we have no real simplicity, purity there. हमारे अंदर कोई सरलता, शुद्धता नहीं है। And because of that, some false ego pride, we're just listening to Maya और इसलिए मिथ्या अहंकार और दंभ की वजह से हम बस माया को सुनते रहते and हैं, Maya's plan, माया की योजना को, Maya's idea. माया के विचारों को। And then Krishna said, because you're false ego, you can't hear me, you're lost and getting more and more lost. और कृष्ण कहते हैं मिथ्या अहंकार की वजह से आप अगर मुझे सुन नहीं पा रहे हैं तो आप भटकेंगे और भटकते ही रह जाएंगे। So is that really what we want, to get more and more contaminated and more lost? And that's what we're going to get. तो अगर हम ये चाहते हैं और ज़्यादा हम गंदे होते जाएं, हमारा दूषण बढ़ता जाए और भटकते जाएं, तो ऐसा ही होगा हमारे If we साथ। want to avoid that tragedy, तो अगर आप इस विषम परिस्थिति से बचना चाहते हैं, then we'll take it more seriously. तब हम इसको गंभीरता से लेंगे। We'll take shelter of the process, हम इस प्रक्रिया का आश्रय लेंगे, shelter of hearing and chanting. श्रवण कीर्तन का आश्रय लेंगे। Then we deserve mercy. तब हम कृपा के पात्र हैं। Then all the effects will come from everything from purification, सारा कुछ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, शुद्धिकरण से शुरुआत the होगी, ability to hear and understand transcendental knowledge, क्षमता मिलेगी सुनने की और समझने की इस दिव्य ज्ञान को, unflinching faith in applying it, अटूट श्रद्धा मिलेगी इसको लागू करवाने के लिए, that it will give this positive result, that kind of confidence, ताकि हमें उस तरह का लाभ प्राप्त हो जिससे हमें और आत्मविश्वास and a मिले stronger and stronger desire for Krishna instead of Maya. और हमारी इच्छा शक्ति और ज़्यादा मजबूत हो कृष्ण के तरफ, माया की तरफ जाने की Without बजाय। constant nityam bhagavata sevaya, instead, without constant hearing about Krishna consciousness, we forget. तो कहते हैं बिना अगर हम नित्य श्रवण कीर्तन ना करें कृष्ण भावनामृत में तो हम भूल जाएंगे। Most places Prabhupada said nityam bhagavata sevaya, it means every day come and hear Hari-katha Krsna-katha, chant Hare Krishna. कुछ जगहों पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं नित्यम भागवत सेवा का मतलब प्रतिदिन आइए हरि कथा श्रीमद्-भागवतम श्रवण कीजिए। But Prabhupada also said it means constantly. लेकिन प्रभुपाद ने ये भी कहा है निरंतर कीजिए इसको। So if we can find association of devotees who are trying to surrender to hearing and chanting process, we have the best chance. तो अगर हमें ऐसा संग प्राप्त होता है जो श्रवण कीर्तन प्रक्रिया में अपने आप को शरणागत करने का, समर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे पास वो सबसे श्रेष्ठ मौका है। Purifying the consciousness and remembering what is our real duty, what is the Sanatan Dharma. अपनी चेतना को शुद्ध करके और हमें सही बुद्धि सद्बुद्धि प्राप्त हो कि हमारा असल सनातन धर्म क्या है, उसको What is the समझना real है। need of our soul? हमारी आत्मा की असल जरूरत क्या है।
So that hearing and chanting in the right association should give us all those benefits and effects. तो श्रवण कीर्तन उस अगर सही संग में करेंगे तो हमें वो प्रभाव और लाभ हमें दिखेंगे। It's the only chance we have. यही एकमात्र मौका है हमारे Without पास। association and hearing and chanting, there's no chance of getting the effects of, purified consciousness, transcendental knowledge, devotion. There's no way anyone can do that. Without association, Prabhupada, you're just living in a phantasmagoria. और बिना सही संग के अगर हम श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो हमें ये सारे कोई भी प्रभाव नहीं दिखेंगे, ना तो शुद्धिकरण, ना दिव्य ज्ञान, ना हमें श्रद्धा प्राप्त होगी। प्रभुपाद कहते हैं हम बिना संग के अगर हम सोचते हैं हम उन्नति कर सकते हैं तो हम किसी कल्पना वाली दुनिया में हैं। That's why when they asked Mahaprabhu, what is the most important thing for one who's very serious for the spiritual life, Mahaprabhu said, asatsanga tyaga. इसीलिए जब कृष्ण ने महाप्रभु से सवाल पूछा है उस व्यक्ति की सबसे पहला उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया असत्संग त्याग। And the only way to give up asatsanga is to do sadhu sanga, satsanga, associate with Krishna's devotees and sincerely hear and chant with them. It's the only way to give up asatsanga. और एकमात्र तरीका है बस असत्संग से बाहर आने का कि निरंतर श्रवण कीर्तन करते रहना कृष्ण के बारे में भक्तों के संग में। One is contaminating and degrading and pulling away from bhakti. एक हमें दूषित कर रहा है और हमें भक्ति के मार्ग से बाहर खींच रहा है, This asatsanga. असत्संग। And other is purifying and simplifying और दूसरा हमें शुद्ध कर रहा है और सरल बना रहा है, and encouraging, inspiring us to surrender and serve. प्रेरणा दे रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है कैसे कृष्ण को शरणागत और सेवा कर सकें। We're surrendering and serving Krishna, and if not, then there's Maya. अगर हम कृष्ण को शरणागत सेवा करें, अगर ना नहीं करें तो अपने आप ही माया का करें। And they give heaven and hell different result. और उसमें नरक और स्वर्ग नरक का फर्क हमें दिखेगा। Then it's just, are we satisfied with our results? तो बस अब हम ये देखना है हम अपने फलों से संतुष्ट हैं। And that's an individual thing. Everyone has to look in the mirror and look within themselves and say, okay, am I happy with what I am and what I have become? तो ये सभी को अपने व्यक्तिगत रूप से देखना है कि मैं जो कुछ बन गया हूँ, स्वयं को आईने में जाकर कहना है, पूछना है कि मैं उससे संतुष्ट हूँ, सुखी हूँ या नहीं जो मैं आज बन चुका हूँ। Is there no room for improvement? क्या उन्नति के लिए और कोई जगह नहीं है? Prabhupada said every day you should be thinking, how do you improve yourself? प्रभुपाद कहते हैं कई जगहों पे हर दिन हमें ये सोचना चाहिए कैसे मैं और ज़्यादा खुद को आगे बढ़ा सकता हूँ। But if we said, no, I already love Krishna, I'm already, I am knowing everything. अगर हम पहले ही कहें कि मैं मुझे कृष्ण से प्रेम है, मैं सब कुछ जानता हूँ। From the childhood I'm worshipping Krishna. हम तो बचपन से ही कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। So there's no room for improvement. You already captured everything. तो कोई आगे उन्नति करने का कोई जगह नहीं है आपके पास। You already तो सब कुछ accomplished पहले ही प्राप्त everything. कर लिया, आप सब पहले ही आप प्राप्त कर चुके हैं। And then really those who really are Premi Bhakta, right, they feel like they didn't do anything yet. और जो असल में प्रेमी भक्त हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। Right? We do one little thing. We're like, hey, everybody, did you see what I did? I did some bhakti. Play a big instrument, हम एक कोई छोटा सा काम करते हैं और हम सबको बुला के दिखाते हैं, देखो मैंने क्या किया, क्या भक्ति किया मैंने आज। You decided to do something for Krishna. Then it's like, hey, everybody, did you see what I did? हम छोटा सा ऐसा कुछ काम करते हैं कृष्ण के लिए, हम सभी को बुला के कहते हैं सबने देखा मैंने आज क्या किया। It says like, the person beating own drum. ऐसे कहते हैं लोग खुद का ही बाजा बजा रहे हैं। And then if we do something wrong, we're like, I didn't do anything wrong. और अगर हम कुछ गलत कर देते हैं बोलते हैं मेरा गलती नहीं था। I don't have any fault. मेरे में कोई गलती नहीं है। I'm perfect. I'm sincere. I'm completely surrendered. मैं पूर्ण हूँ, मैं गंभीर हूँ, मैं पूर्ण रूप से शरणागत हूँ। Of course, everything belongs to Krishna. सब कुछ कृष्ण का है। Who can deny that? कौन इसको अस्वीकार करेगा? Right? So we're just theoretically saying, sentimentally we're saying. तो हम बस मुंह से कहते हैं, बस भावनाओं में कहते थे। Gopal's acting like he's some big, mahant. He's the mahant of the Pagala ashram now. गोपाल सोचता है ये कोई बहुत बड़ा महंत है, ये पागल आश्रम का महंत है। He's in charge. Only problem, he can't get the ghosts out. The other guy, at least he could get the ghost out of there, समस्या ये है कि ये तो भूत भी नहीं निकाल सकता, दूसरा व्यक्ति जो है कम से कम भूत निकाल लेता था। Right? So who's really in charge in that ashram? That's another question. तो अब आश्रम का इंचार्ज कौन है, ये दूसरा सवाल। Oh, Krishna. So we need a lot of mercy. Do we realize that? हमें बहुत कृपा की जरूरत है, क्या हम महसूस कर पा रहे हैं?
With such scholars, with such, doctors of religion, is it? हम इतने बड़े विद्वान हैं, हम जो है धर्म के बड़े डॉक्टर हैं, We have so much bhakti. हमारे अंदर बहुत भक्ति है। I remember one man in Bhubaneswar in the class, he stood up, he said, I want to say something. Many people were there. Yes, yes, sir, you say something. मुझे याद है भुवनेश्वर में एक व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया क्लास में और उन्होंने कहा मुझे कुछ कहना है, और वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे। मैंने कहा ठीक है, कहिए क्या कहना चाहते हैं। And he said, I just want to say how much I love Krishna. और उन्होंने कहा मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं कृष्णा से कितना प्रेम करता हूँ। I so much I love Krishna. मैं कृष्णा से बहुत प्रेम करता हूँ। He said like this, I so much I love Krishna. उन्हें ऐसे ही कहा मैं बहुत प्रेम करता हूँ कृष्णा से। And he said, but I also love Maya. उसने कहा मैं माया से भी बहुत प्रेम करता हूँ। You can't have both. Krishna says, Manmana bhava bhakto. Only think about me. Don't think about Maya. आप दोनों नहीं कर सकते। कृष्ण कहते हैं मन मना भव मत भक्तो, माया के बारे में मत सोचो, सिर्फ मेरे बारे में सोचो। So Krishna is only interested in pure devotional service, and we'll talk about more of that in the class today. और कृष्ण को सिर्फ शुद्ध भक्ति में रुचि है, और इसके बारे में हम क्लास में और चर्चा करेंगे। So if we don't have it, which most of us do not, then we should be desiring, I need to get that somehow or other. तो अगर हम ज़्यादातर लोगों के पास अगर ये नहीं है तो हमें इच्छा करनी चाहिए कैसे हम उसको प्राप्त कर सकें। Otherwise, how do we practice spiritual life if we have no real love and devotion and interest in spiritual life? हम कैसे आध्यात्मिक जीवन प्रयास करते हैं अगर हमारे पास प्रेम नहीं है, रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है आध्यात्मिक जीवन की। Some inspiration, some spiritual desire is required. कुछ प्रेरणा, कुछ आध्यात्मिक इच्छा हमें ज़रूरी है। Right? Do you have any interest, really? क्या आपका कोई असल में रुचि है इसमें? Who are you listening to? आप किसको सुन रहे हैं? Huh? Really? आप मुझे सुनने का प्रयास I feel like I'm competing with the ghosts. मुझे ऐसा लग रहा है मैं भूत के साथ लड़ाई कर रहा हूँ। Maybe I should call this guy from the Pagala ashram. He can take Sanatan in the back room and like get those ghosts out of him, you know. Then he can come back and hear something. मुझे लगता है मुझे उस पागल आश्रम के इंचार्ज को बुलाना चाहिए ताकि सनातन को पीछे के रूम में ले जा सके, पीट कर भूत निकाल सके, तब ये वापस आके कुछ सुन पाएंगे अच्छे से। And then the interesting thing is, I'm just praying to Krishna. और रुचिकर बात ये है वो हमेशा ये कह रहे हैं मैं कृष्णा से प्रार्थना कर रहा हूँ। And they really believe that. और वो सोचते हैं कि वो कर रहे हैं ऐसा। But they're completely messed up and nothing's Krishna not entering in, but I'm praying to Krishna. You वो know? पूरी तरह अस्त व्यस्त है और कृष्णा उनके अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं कृष्णा से प्रार्थना कर रहा हूँ। I'm just praying to the super soul. मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ। Right? Then the super soul is coming out and speaking to you directly, and it's like, hey, I'm trying to talk to you, and you're like, well, I'm praying to the super soul. You know? और सुपर सोल जो परमात्मा बाहर आके हमसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं और सुपर सोल कह रहे हैं मैं तुमसे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ और हम कह रहे हैं नहीं मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ अंदर। Hare Krishna. Grantaraj Śrīmad-Bhāgavatam ki. I remember one devotee, they asked, can you serve the prasadam for the devotees? एक बार एक भक्त को पूछा गया कि आप भक्तों को थोड़ा प्रसाद सेवा कर सकते हैं, प्रसाद सर्विंग करना। And devotee saying, is this coming from the super soul? तो उस भक्त ने पूछा क्या ये परमात्मा से आ रहा है निर्देश? So is Maya going to tell you to humbly serve the Vaishnavas? क्या माया आपको कहेगी कि विनम्र भाव से जाके वैष्णव का सेवा करना है? Can you take a turn to serve the devotees? Like, how do I know that's coming from Krishna? Are you the super soul? You in touch with the super soul giving me this type of instruction? जो है भक्तों को विनम्र रूप से ऐसे प्रसाद सेवा करना, ये आपको क्या लगता है ये निर्देश कृष्णा से आएगी या माया से आएगी? Or you're walking by devotee and something telling you, maybe you should be humble, pay obeisances, right? We're just like, this is Maya. Why is Maya telling you like this? कई बार हम किसी भक्तों से के आसपास से गुजर रहे होते हैं, हमारे मन में विचार आता है कि मुझे उनको दंडवत करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। तो क्या ये कृष्णा से आएगा या माया से आएगा? हमें तो विनम्र Some random thought is coming to my mind that I should pay obeisances to this devotee, अचानक से मेरे मन में कोई विचार आया कि मुझे इस भक्त को नमस्कार करना चाहिए, तो ये माया से नहीं आएगा। What is that? I don't have to do that. Why Maya's telling like this? तो हम सोचते हैं माया मुझसे ऐसा क्यों कह रही है? Right? Maya's going to tell you to be humble and pay obeisances to the Vaishnavas? माया आपको कहेगी कि विनम्र भाव से आप किसी वैष्णव का नमस्कार करिए। So Krishna telling you, well, that's Maya. कृष्ण हमें कहते हैं और हम बोलते हैं नहीं ये माया है।
then Maya is telling him, we're saying, oh, that's Krishna. और जब माया कहते हैं हम कहते हैं ओ ये कृष्ण है। So we're completely bewildered what to do, isn't it? तो हम पूरी तरह भ्रमित हैं हमें क्या करना है। So without Krishna's mercy, how will we know what is truth? What is the ring of truth? तो बिना कृष्ण की कृपा के हम कैसे समझ पाएंगे कि सत्य क्या है। So let's turn to our text today. तो चलिए आज के श्लोक पे हम आते हैं। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So reading Śrīmad-Bhāgavatam, first canto, chapter 2, Divinity and Divine Service. तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद दूसरे अध्याय से हम पढ़ रहे हैं दिव्य और दिव्यमय सेवा। And today we're reading text 6. और आज हम श्लोक नंबर 6 पढ़ेंगे। Why are you talking about the bhakti, divinity, divine service? We want to hear some lila. आप भक्ति के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? दिव्य और दिव्यमय सेवा। Yes, this is the lila, how conditioned souls get out of Maya and understand who is the divinity and what is divine service. This is that lila we're talking about. यहाँ पे हम उस लीला के बारे में बात कर रहे हैं हम कैसे जो है बद्ध जीवात्मा अपने आप को शुद्ध कर सके और कैसे समझ सके कि दिव्य क्या है, दिव्यमय सेवा क्या है, ये है ये लीला। Right? Krishna killing the demons. कृष्ण Just like असुरों का वध Putana. करते हैं, जैसे Right? पूतना, Just like the other big demons. जैसे Right? और बड़े-बड़े असुर हैं। Right? So we're the big demons. So Krishna Mahaprabhu trying to kill the demons. तो हम असुर हैं, बड़े असुर हैं और कृष्ण So this is महाप्रभु also असुर का वध लीला. करने का प्रयास कर रहे हैं। Only we are the demon, यहाँ पे हम असुर more or हैं, less. कम या ज़्यादा, More or less. कम या ज़्यादा असुर। My Gurudev used to say that Krishna in previous incarnations used to cut off their head, मेरे गुरुदेव कहा करते थे कृष्ण पहले के अवतारों में जब सर काट देते थे, right? But not in this Kali Yuga. लेकिन कलयुग में नहीं। Mahaprabhu not cutting off your head. महाप्रभु सिर नहीं काट रहे हैं। You like to sometimes get it cut off, but Mahaprabhu, he killed the demon inside. हम पसंद है कि कभी सर काटा जाए, लेकिन महाप्रभु हमारे भीतर के असुर को मारते हैं। Did he just call us demons? क्या ये हमें असुर कह रहे हैं? We're devotees. हम भक्त हैं। I'm offended by this statement. मैं बहुत नाराज हुआ इनकी बात से। Prabhupada said everyone's a demon here in Kali Yuga, more or less. You could be a big demon, a small demon. प्रभुपाद ने कहा कलयुग में सब लोग असुर हैं, कम या ज़्यादा, हो सकता है छोटे हों या बड़े हों। That's up for, Krishna to say. तो ये कृष्ण बताएंगे। But it means killing the demon inside. इसका मतलब असुर जो है भीतर के असुर को मारना। So this is that lila. ये वो लीला है। In case you wanted some lila, in case you wanted to be part of a lila. हो सकता है आपको इस लीला कहानी सुन। It's not just hearing a lila, we're part of the lila. हम लीला सुन नहीं रहे हैं, बस इस लीला के हम भाग हैं। That's even better, isn't it? ये और बेहतर है या नहीं? So what are you complaining about? आप किस बात की शिकायत कर रहे हैं? You're part of the lila. आप भी इस लीला में हैं। So please repeat. कृपया दोहराइए। Saha by puṁsāṁ paraḥ dharma yataḥ bhaktir adhokṣaje ahaituky apratihatā yayā yayātmā suprasīdati Savai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje ahaitukī apratihatā yayātmā suprasīdati Savai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje ahaitukī apratihatā yayātmā suprasīdati Savai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje ahaitukī apratihatā yayātmā suprasīdati
Does anyone know it? Want to try? कोई प्रयास करना चाहेंगे? कोई जानते हैं इस श्लोक को? सवै पुंसां परो धर्मो Savai puṁsāṁ paro dharmo bhaktir adhokṣaje yato bhaktir adhokṣaje ahaituky apratihatā ahaituky apratihatā yayātmā suprasīdati yayātmā suprasīdati Savai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje ahaitukī apratihatā yayātmā suprasīdati Savai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje ahaitukī apratihatā yayātmā suprasīdati Saha that वो by certainly अवश्य ही puṁsāṁ for mankind मनुष्य जगत के लिए paraḥ sublime transcendentally nectar filled. दिव्य अमृत, How's that? That's a real sublime. ये असल दिव्य अमृत है. Dharma, occupation, activity. पैसा, Yataḥ, by which जिसके द्वारा bhakti, devotional service, भक्ति, adhokṣaje, unto the transcendence, दिव्य में, ahaitukī, causeless, ahaituky, apratihatā, unbroken, बिना टूटा हुआ, yayā, by which जिसके द्वारा atma, the self, स्वयं suprasīdati, completely satisfied. पूर्ण रूप से संतुष्ट. Translation and purport by Srila Prabhupada. अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का. The supreme occupation परम पैसा, of Sanatan Dharma सनातन धर्म for all humanity सभी मनुष्य के लिए is that by which man can attain to loving devotional service, वो है जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है. prem bhakti, प्रेम भक्ति unto the Supreme Lord Shri Krishna. परम भगवान श्री कृष्ण की तरफ. Such devotional service must be unmotivated, materially unmotivated, ऐसी भक्ति बिना किसी भौतिक उद्देश्य के होनी चाहिए and uninterrupted और बिना किसी रुकावट के, to completely satisfy the self. जो स्वयं को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर देगा. Purport by Srila Prabhupada. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद. In this statement, Sri Sutta Goswami answers the first question of the sages of Naimisharanya. इस श्लोक में सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के द्वारा उठाए गए सवाल का पहला जवाब देते हैं. The sages asked him to summarize the whole range of the revealed scriptures ऋषियों ने उनको पूछा सारे वैदिक शास्त्रों का उनको सार बताइए and present the most essential part और सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका बताइए, so that the fallen people or the people in general ताकि पतित लोग और सामान्य लोग might easily take it up. आसानी से इसको ले सके. The Vedas prescribe two different types of occupation for the human being. वेद दो प्रकार के धर्म बताते हैं मनुष्य जीव के लिए. One is called pravritti marg, एक कहते हैं प्रवृत्ति or the path of sense enjoyment, इंद्रिय तृप्ति का मार्ग, and the other is called nivritti marg, और दूसरा जो है निवृत्ति मार्ग, or the path of renunciation. त्याग का मार्ग. The path of material sense enjoyment is inferior, और इंद्रिय तृप्ति का मार्ग नीचा है, and the path of sacrifice and divine austerity for the supreme cause is superior. और दिव्य तपस्या और त्याग परम सत्य के लिए ये ऊंचा है. The material existence of the living being is a diseased condition of actual life. भौतिक अस्तित्व जीव के लिए एक बीमार परिस्थिति है. Actual life
is spiritual existence असल जीवन आध्यात्मिक अस्तित्व है or Brahma Bhuta platform. या ब्रह्मभूत स्तर, Brahma Bhuta existence, ब्रह्मभूत अस्तित्व, where life is eternal, जहाँ जीवन नित्य होता है, blissful, आनंदपूर्वक and full of knowledge. और पूर्ण रूप से ज्ञान। Material existence is temporary. भौतिक अस्तित्व अस्थायी होता है, It's illusory, ये मोह, इसमें मोह होता है and it is full of miseries. और पूर्ण रूप से कष्ट होता है। There is no happiness at all. यहाँ कोई सुख नहीं होता, There is just a futile attempt to get rid of the miseries. बस एक हमारी असफल प्रयास होता है कष्टों से बाहर आने का। And when we're temporarily feel cessation of the misery, then we're calling that happiness. और अस्थायी रूप से जब हमें कष्टों से मुक्ति मिलती है, उसी को हम सुख कहते हैं। So we're usually really suffering. तो हम असल में हमेशा दुख होते And हैं। sometimes the suffering is not as bad. और कभी-कभी दुख उतना बुरा नहीं होता, And we're saying that is my और happiness. उसी को हम सुख कहते हैं। So it's not real happiness. ये असल सुख नहीं, We're just not suffering as much in that moment. हम बस उतना ज़्यादा दुख नहीं भोग रहे उस क्षण में। Therefore, this path of progressive material enjoyment, which is temporary, miserable, and illusory, इसीलिए ये इंद्रिय तृप्ति का मार्ग अस्थायी है और मोहग्रस्त है, is inferior. ये नीचा है। But devotional service to the Supreme Lord, लेकिन परम भगवान के प्रति भक्ति, which leads one to eternal, blissful, and all cognizant life, ये सच्चिदानंद जीवन की तरफ मनुष्य को लेके जाता है। as a Brahma Bhuta existence, ये ब्रह्मभूत अस्तित्व है। that is called the superior quality of occupation. इसको सबसे ऊंचा धर्म माना जाता है। Then we're acting on the platform of the soul, इसका मतलब हम आत्मा के स्तर पे कार्य not कर on the platform of the temporary body. शरीर के अस्थायी शरीर के आधार पर काम नहीं कर रहे हैं। So that superior quality of occupation is sometimes polluted when it's mixed with the inferior quality. तो ये ऊंचा प्रकार का धर्म कभी-कभी दूषित हो जाता है जब इसका मिश्रण किया जाता है इस नीचे प्रकार के यानी कि इंद्रिय तृप्ति के धर्म के साथ। For example, adoption of devotional service for material gain उदाहरण के लिए भक्ति के मार्ग में आना कुछ भौतिक चीजों को पाने के लिए is certainly an obstruction to the progressive path of renunciation. ये एक रुकावट है इस त्याग के पथ के लिए। So this renunciation or abnegation for the ultimate good is certainly a better occupation than this enjoyment in the diseased condition of life. तो ये संन्यास या त्याग का पथ ज्यादा बेहतर पथ है इस इंद्रिय तृप्ति के जो नीचा मार्ग है उससे। Such enjoyment only aggravates the symptoms of the disease. ऐसी भोग करने इस तरह से भोग करने से हमारी बीमार अवस्था और बुरी तरह से प्रभावित होती है। So such material enjoyment is just aggravating the symptoms of disease, and it increases in its duration. और इस तरह का हम भौतिक भोग करें तो हमारी बीमार अवस्था और ज़्यादा बढ़ती है और बुरी तरह से प्रभावित होती है। Just increases the suffering condition. दुखमय परिस्थिति को आगे बढ़ाती है। Therefore, devotional service to the Lord, it must be pure in quality, इसलिए भगवान की भक्ति शुद्ध रूप से की जानी चाहिए, without the least desire for material enjoyment. जितना कम हो सके भौतिक भोग के उद्देश्य से। One should therefore accept the superior quality of occupation in the form of the devotional service of the Lord, इसीलिए किसी को ये ऊंचे प्रकार का धर्म स्वीकार करना चाहिए जो कि भगवान की भक्ति है, without any tinge of unnecessary desire, बिना किसी भौतिक इच्छा के, रंच मात्र भौतिक इच्छा के, fruit of action and philosophical speculation. कर्म या ज्ञान। Then this quality of pure devotional service alone can lead one to perpetual or constant solace and happiness, peace and happiness in the Lord's service. और इस तरह की भक्ति स्वयं ही किसी को पूर्ण रूप से आनंदित और हमेशा शांत और पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थापित कर सकती है। We have purposefully denoted dharma as occupation हम धर्म को पेशे के रूप में मानते हैं because the root meaning of the word dharma is that which sustains one's existence. क्योंकि धर्म का मूल अर्थ ये है जिसके आधार पे हमारा अस्तित्व है। A living being's sustenance or existence is to coordinate his activities with his eternal loving relationship with Supreme Lord Krishna.
जीवात्मा का अस्तित्व होता है जब वो भगवान के साथ सहयोग करे और नित्य रूप में उनके साथ भक्ति में मार्ग में उनसे संबंध बना के उनकी सेवा करे। So Krishna is the central pivot of all living beings. तो कृष्ण सभी जीवात्माओं के केंद्र बिंदु हैं And he is the all-attractive living entity, और वो सर्वाकर्षक परमात्मा है, or eternal form amongst all other living beings or eternal forms. या वो एक नित्य रूप है सारे जीवात्माओं के बीच। Each and every living being has his eternal form in spiritual existence. हर एक जीवात्मा का एक नित्य स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में, And Krishna is the eternal attraction for all of them. और कृष्ण सभी के लिए नित्य आकर्षक रूप है। So if we don't come to this spiritual existence or platform, how will we be attracted to Krishna? तो अगर हम अपने इस नित्य स्वरूप को नहीं प्राप्त करेंगे तो हम कृष्ण के प्रति आकर्षित कैसे होंगे? So Krishna is the complete whole, कृष्ण एक परम पुरुष and है everything else is his part and his parcel. और सभी कुछ उनका अंश है। The relation is one of the servant and the served. और संबंध सेवक और मालिक का है। So we all have an eternal loving relationship with Krishna. तो हमारा नित्य प्रेम में संबंध है कृष्ण के साथ, And that relationship is transcendental और ये संबंध दिव्य है and is completely distinct or different from our experience in the bodily concept of life in the material existence. और ये पूरी तरह से भिन्न है हमारे शारीरिक स्तर पे जो इस भौतिक अस्तित्व में हम हैं। This relation of servant and the served is the most congenial form of intimacy. और इस तरह का संबंध सेवक और मालिक के रूप में ये सबसे महत्वपूर्ण सबसे करीबी संबंध है। One can realize how nice it is as our devotional service is progressing. कोई इसको महसूस कर सकता है जैसे वो भक्ति के पथ पर आगे बढ़े। Everyone should engage himself in that transcendental loving service of the Lord, प्रत्येक को अपने आप को इस दिव्य सेवा में लगाना चाहिए भगवान के, even in the present conditional state of material existence. यहाँ तक कि अपनी वर्तमान परिस्थिति भौतिक अस्तित्व में भी, And that will gradually give one the clue to actual life or spiritual life. और ये धीरे धीरे उनको तरीका बताएगा असल आध्यात्मिक जीवन का, And भक्ति का। please the Atma, please the self, और आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होगी, आत्मा की प्रसन्नता प्राप्त to होगी, complete satisfaction. पूर्ण संतुष्टि। Om Jnana-Tamarandasya Gananjana Shalakaya Chakshurnutam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Srila Prabhupada Srila Gurudeva Ki Samaveda Bhakti Vrinda Ki. So again, translation. अनुवाद फिर से। Savai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje ahaituky apratihatā yayātmā suprasīdati. The supreme occupation परम पेशा, or sanatan dharma सनातन धर्म for all humanity सभी मनुष्यों के लिए is that by which man can attain to loving devotional service, वो है जिसके माध्यम से कोई भगवान का प्रेममय सेवा प्राप्त कर सकता है, prema bhakti, प्रेम भक्ति unto the transcendent Lord. परम पुरुष के प्रति। Such devotional service must be materially unmotivated ऐसी भक्ति बिना किसी भौतिक उद्देश्य के की जानी चाहिए, and uninterrupted बिना किसी रुकावट के, to completely satisfy the self. जो पूर्ण रूप से आत्मा की संतुष्टि दे सके। So Krishna is only interested in pure devotional service, unalloyed pure devotional service. कृष्ण को सिर्फ शुद्ध भक्ति, अमिश्रित भक्ति में रुचि है, That is the goal. ये हमारा लक्ष्य है। Krishna says, by all the Vedas I am to be known. कृष्ण कहते हैं सारे वेदों के द्वारा मुझे जानो। To know Krishna means to surrender to Krishna कृष्ण को जानने का मतलब कृष्ण को and समर्पण ultimately करना develop loving devotion to Krishna. और अंततः प्रेम में भक्ति प्राप्त करना So कृष्ण के प्रति। desiring to qualify ourselves to develop love for Krishna, that's also, we're motivated. तो अगर हम कृष्ण के प्रति कृष्ण की इच्छा कर रहे हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम But भक्ति it's प्राप्त करने का a इच्छा कर रहे हैं, spiritual motivation. तो यहाँ भी उद्देश्य है हमारा, लेकिन ये आध्यात्मिक इच्छा है हमारी। And if we do it with no material motivation and constantly, then Krishna is most pleased. तो अगर हम इसको करते रहते हैं निरंतर, तो कृष्ण इससे प्रसन्न होते हैं। The reservoir of all pleasure, Rama, is in the heart of every living entity.
सारे आनंद के स्रोत राम हम सभी जीवात्मा के हृदय में स्थित हैं। So if the reservoir of all pleasure is happy with us, automatically we'll become happy. तो ये आनंद के स्रोत अगर हमसे प्रसन्न हैं तो स्वाभाविक रूप से हम प्रसन्न होंगे। The problem is everyone wants to be happy. It's natural to be happy, Prabhupada says, but you're trying to do it without Krishna. सभी को प्रभुपाद बताते हैं सभी को खुश होना चाहते हैं, खुश होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हम इसको कृष्ण से अलग होकर करने का प्रयास कर रहे हैं। So therefore we're never really satisfied. इसलिए हम कभी असल में संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। Usually we're suffering and anxiety, hankering, lamenting. Once in a while we say, things went my way. Right? ज़्यादातर समय Things are going in my direction now. कभी-कभी चिंता में हम बहुत दुख में होते हैं, चिंता में होते हैं, हमेशा उत्कंठा करते हैं, हमेशा शोक करते हैं, और कभी-कभी कोई चीज़ हमारे अनुरूप चलती है तो हम कहते हैं So हम we बहुत get खुश some हैं। hope, we get some little feeling like things are turning around, things are going to be great now. तब हम सोचते हैं अब चीज़ें सही हो रही है, अब चीज़ें जो बेहतर होंगी अब धीरे-धीरे। A little bit of our anxiety goes away. थोड़ा सा हमारा चिंता मुक्त होता है। Right? Maya is cheating us, माया basically. हमें ठग रही है इसमें। And then we're saying, now I'm happy. और हम कहते हैं अब हम खुश हैं। But how long does it last? कितने दिन चलता है वो? We cannot keep it like that हम उसको रख नहीं पाते हमेशा, because it's chanchalam. क्योंकि ये चंचल है, It's always changing. हमेशा बदलती रहती है। So really there's no real steady, peaceful material platform. इसलिए कोई ऐसा भौतिक स्तर नहीं है, स्थिर जगह So नहीं है। Krishna is interested in pure loving devotional service, Shuddha Bhakti, कृष्ण Prem सिर्फ- Bhakti. कृष्णा को सिर्फ प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति में रुचि है। And if we somehow or other are like that or desire to become like that, then Krishna says, I'll explain to you how to qualify yourself, how to reach that worthy goal. और अगर हम किसी तरह ये इच्छा करते हैं और हम इस लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो कृष्णा उसको देखेंगे और वो कहेंगे, वो हमारी मदद करेंगे उस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। In Chaitanya Charitamrita and Adi Leela 1775 in the translation, चैतन्य चरितामृत आदि लीला के तात्पर्य में बताते हैं, it says, by following the paths of speculative philosophical knowledge, इस तरह के ज्ञान के मार्ग को चुनकर, it's a jnana, ज्ञान मार्ग or fruit of activity or Yeah. karma, या कर्म के मार्ग को चुनकर, or mystic yoga to control the senses, या योग पथ को चुनकर हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करके, some ashtanga yoga, some yoga, अष्टांग योगा या किसी तरह का योग, one cannot satisfy Krishna, कोई कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर सकता। the Supreme Lord. परम भगवान Unalloyed devotional love, Shuddha Bhakti, सिर्फ शुद्ध भक्ति, अमिश्रित भक्ति for Krishna कृष्ण के प्रति is the only cause for the Lord's satisfaction. एकमात्र कारण है भगवान के सत्य संतुष्टि का। So unless this is materially unmotivated and constant, that's the only thing that's going to satisfy Krishna. और जब तक ये बिना उद्देश्य के हो, बिना किसी रुकावट के हो, तभी ये कृष्ण को संतुष्ट कर पाएगा। So without going for that, there's no question of our own peace of mind and satisfaction and happiness. It's not possible. अगर हम इसका प्रयास नहीं कर रहे हैं तो हमारी संतुष्टि, हमारे सुख का कोई सवाल नहीं उठता। That's why Prabhupada said there's no happiness here in the material world. इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इस भौतिक जगत में कोई सुख नहीं। But out of ignorance, we're thinking that there's some happiness here. लेकिन हम अपने अज्ञान में सोचते हैं यहाँ कोई सुख है। Prabhupada gives the example if the man is being drowned, somebody's drowning him in the water, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, and he's suffering like anything, बुरी तरह दुख में है, right? Then you just pull his head out for 1 second, फिर उसका सर बस 1 सेकंड के लिए बाहर निकालते हैं, he breathes some fresh air, वो कुछ खुली हवा सांस and then he लेता है, says, happiness, this is happiness. और वो कहता है ये आनंद है, And then back down again, और isn't फिर it? से उसको पानी में डुबा Right, so दिया। that's what we're calling happiness. इसको हम आनंद कहते हैं। So my suffering was not as bad today. तो मेरा दुख आज उतना ज़्यादा नहीं था। So you're happy? तो क्या आप खुश Well, हैं? it's just not suffering as much. मतलब उतना ज़्यादा दुख नहीं हो रहा है आज, That's what we're calling happiness इसी को here. हम सुख कहते हैं। But as Prabhupada said the other day, there's no use in trying to argue whether you can be happy here or not. जैसे प्रभुपाद दूसरे दिन कह रहे थे, कोई बहस नहीं की जा सकती इस बात पे कि You आप have to यहाँ खुश be होंगे या नहीं। wise, intelligent, thoughtful enough to realize it's not really peace and happiness. आपको इतना बुद्धिमान और चतुर होना होगा, ईमानदार होना होगा, असल में ये जगह सुख का जगह नहीं है। And in fact, there's so much threefold miseries and anxiety and disturbances and suffering here on this platform. और उसके अलावा यहाँ पर 3 तरह के भौतिक ताप, चिंताएं, सभी तरह का कष्ट, सभी तरह का दुख हमें यहाँ इस
स्तर पे मिलता है। Prabhupada gives the other example of the fish out of the water. प्रभुपाद दूसरा उदाहरण देते हैं मछली को जब पानी से बाहर निकाल दिया If जाता you है। take the fish and you put him in a nice lounge chair and you give him some nice lassi drink and some grapes and sunglasses and right, that fish cannot be happy there, you know. प्रभुपाद उदाहरण देते हैं अगर हम मछली को बाहर निकाल के बहुत आरामदायक कुर्सी में बिठाएंगे, उसको बहुत अच्छे अच्छे पीने की खाद्य सामग्री अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे और अच्छे चश्मे पहनाएंगे तो मछली उससे खुश नहीं हो सकती। Right? He's out of his element. वो अपनी जगह से बाहर है। Right? You throw him back in the water, that's where he's going to be happy. अब उसको पानी में वापस फेंकिए वो खुश हो जाएगी। Right? Then he'll go swimming away, right? फिर वो इस तरह तैरते हुए निकल जाएगी। Right? So we're meant to be with Krishna enjoying in spiritual atmosphere. तो हम कृष्ण के साथ आनंद भोगने के लिए बने हैं आध्यात्मिक वातावरण में। That means a Vaikuntha atmosphere, no stress, no anxiety, no disturbance, no suffering. वैकुंठ वातावरण में जहाँ कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। But we're refusing to swim in that spiritual ocean. लेकिन हम अस्वीकार कर रहे हैं उस आध्यात्मिक समुद्र में तैरने के लिए। Because Maya is saying, you don't have to do that to be happy. We have another plan for you. क्योंकि माया कह रही है आपको वो करने की जरूरत नहीं है सुखी होने के लिए, हमारे पास दूसरी योजना है। So then we're going on this path of material sense gratification, thinking ultimately they will be happy. Otherwise, why would we do it? और हम ये सोचते हुए इस भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे आगे जा रहे हैं, सोच कर कि हम इसमें आगे खुश होंगे, वरना हम इस पद पर जाएंगे क्यों? One time I was distributing books in one place, and these two drunkards were there. एक बार मैं किताब बांट रहा था और वहाँ पे दो मुझे शराबी मिले। First they were collecting money. They were like best of friends. पहले वो पैसे जमा करते थे और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। Because they needed each other and they had a plan. We're going to get some liquor, right? क्योंकि उन दोनों की योजना थी, हम जाएंगे, पैसे जमा करेंगे और हम कुछ शराब खरीदेंगे। Then I was there all day distributing books. I was just looking at these two characters, you know. और मैं पूरे दिन वहाँ किताब बांट रहा था, तो मैंने ये दो कैरेक्टर वहाँ देखा वहाँ। Jagai Madai. जगाई मदाई। Prabhupada said everyone in Kali Yuga really like Jagai and Madai, you know. बात बताते हैं कलयुग में सभी को जगाई मदाई जैसे हैं। But anyway, then finally they collected enough and they bought something to drink. मैं देखा अंत में उन्होंने काफी पैसे जमा कर लिया और फिर वो जो है शराब खरीदने के लिए गए। And then they're drinking, and next thing you know, they're fighting with each other, you know. फिर वो पीते गए और लास्ट में मैंने देखा दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। And then the guy cracks him on the head, and his blood is coming out of his head. और दूसरे शराबी ने उसका सर फोड़ दिया, उसके सर से खून बहने लगा। And then he's like laughing and joking, like he's having like a great time, you know. और फिर वो आनंद में हंसने लगा और मजाक करने लगा, जैसे उसको बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा समय बीत रहा है उसका। You're not realizing your head is cracked open, you know. और समझ नहीं पा रहा, महसूस नहीं कर पा रहा, उसका सर The फट के blood बाहर आ is गया है। coming down. खून बाहर नीचे गिर रहा है उसका। But he's like, oh, he's acting like he's having the best time on the planet, you वो know. ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे उसका इस जगह में सबसे अच्छा समय बीत रहा है। Right? This is a happiness. ये सुख है। Right? So everyone in the material world is intoxicated. तो भौतिक जगत में सभी को इस तरह से नशे में चूर है। Right? It's like a pain medication, isn't it? कोई दर्द को कम करने के बस दवा ले रहे हैं। Oh, to get rid of my stress and anxiety, ताकि I'm मैं doing चिंता- like this. Right? चिंता और तनाव से मुक्त हो I need सकूं, some बस इस तरह marijuana, I need some narcotics, I need some. कुछ गांजा, कुछ I नशीला have पदार्थ लेते stress. हैं। I have attention deficit disorder. मैं जो है किसी तरह का ध्यान को हटाने This के लिए किसी calms तरह me का down. दवाई देता हूँ ताकि ये मुझे So शांत many करे। excuses, बहुत right? सारे बहाने हम देते हैं इस तरह से, So because everybody in a suffering condition. क्योंकि सभी कोई दुखमय स्थिति में है। So we want to be happy, we need to be happy. हम खुश होना चाहते हैं, हम खुश होने के लिए बने हैं, That's normal. ये स्वाभाविक है। But Prabhupada said you're doing it in the wrong way. प्रभुपाद कहते हैं आप इसको गलत तरीके से So कर रहे हैं। here Krishna, Guru Sadhu Shastra said this is how you really can become peaceful and happy. तो यहाँ कृष्ण गुरु साधु शास्त्र बता रहे हैं यहाँ वो तरीका है जहाँ आप असल में खुश हो सकते हैं। But Maya said no, you don't have to do this. लेकिन माया कहती नहीं, You आपको just ये have करने to की जरूरत adjust नहीं your है। plan. आपको बस अपनी योजना ठीक से You बनानी need a new है। plan. हमें नई योजना बनानी So in this way we're getting cheated again and again and again. तो इस तरह से हम ठगे जा रहे हैं बार बार, And putting so much energy, so much time, so much investment, resource there. बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा समय, बहुत सारी संपत्ति अपना खर्च कर रहे हैं उसके पीछे। And then you get a little bit of success, unlimited suffering for that. We say, oh yeah, now I'm successful. और हमें थोड़ी सी सफलता मिलती है और असीमित दुख मिलता है उसमें और हम कहते हैं ये हमारी सफलता है। And then the next minute the government cancels your contract.
और अगले ही क्षण आपको पता चलता है सरकार ने आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा दिया है सारा, or someone better comes with some better offering, right? या कोई और बेहतर व्यक्ति आ गया, उसने कुछ बेहतर So now प्रस्ताव you're दे दिया not है। you're not only game in town, तो आप ही एकमात्र खिलाड़ी नहीं है इस शहर में, right? So now complete anxiety. What if somebody comes around and does better than we do? और हमें पूरी चिंता रहती है क्या होगा, कोई और अगर शहर में आ जाएगा जो हमसे बेहतर करके दिखा दे। So always in anxiety. हमेशा चिंता में There's no peace, no happiness. कोई सुख नहीं। So here, this is Prabhupada said, this is the peace formula प्रभुपाद बताते हैं ये है in शांति का Bhagavad सूत्र। Gita. Right? Understand that Krishna, He is the cause of all causes. समझना इस बात को, कृष्ण सभी कारणों के कारण है, Everything ultimately belongs and is controlled by Him. सभी कोई अंत में कृष्ण की है और उनके द्वारा नियंत्रित The की जाती है। supreme proprietor, वो परम मालिक है सभी the चीजों के, supreme controller, परम नियंत्रण करता है। and Krishna is well-wishing friend of all living entities. और कृष्ण सभी जीवात्माओं के शुभचिंतक मित्र हैं। It says if you can understand that, then you become peaceful and you become happy. और कहते हैं जब आप इसको समझ पाएंगे तब आप शांत और सुखी हो पाएंगे। But we're foolish. लेकिन हम मूर्ख हैं, We're susceptible to listen to Maya because of this addiction to mental speculation. कि मनोधर्म की हमें इतनी बुरी आदत लगी हुई है कि हम बस माया को सुनते And रहते we're हैं। unfortunate because we don't remember, we don't have a brain to know this is never going to work. और हम बहुत दुर्भागे हैं, हम कभी प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, ये कभी काम And नहीं we आएगा। keep making the same stupid mistakes again and again and again, हम एक ही बेवकूफ़ी वाली गलती बार बार करते रहते हैं expecting different result this time. और हम सोचते हैं हमें दूसरा कुछ फल मिलेगा इस बार। And that's said to be the definition of insanity. और इसी को पागलपन की परिभाषा दी जाती है। So in the Śrīmad-Bhāgavatam, I have to quote authority. तो यहाँ श्रीमद् भागवतम में यहाँ अधिकारी, Otherwise you'll think I'm just making all of this thing up, you know. और आप सोचेंगे मैं खुद से कुछ चीजें बना रहा हूँ। Oh, he's just some good talker or something like that, you know. Who knows what is the basis of all of his information, you know. लेकिन ये जो कुछ बोल रहे हैं उसका आधार क्या है? He's acting like he knows something sitting up there. He doesn't even have a PhD, you know. ये बैठ के यहाँ दिखावा कर रहे हैं कि आप कुछ जानते हैं, इनके पास PhD की डिग्री भी नहीं है। Right? So in Śrīmad-Bhāgavatam 11th canto, श्रीमद् भागवतम 11 स्कंद 14th chapter, 20 14 verse. अध्याय 20 नंबर श्लोक। This is Krishna himself. He's speaking to Uddhava. कृष्ण स्वयं उद्धव से कह रहे हैं, And he's saying, my dear Uddhava, neither through this Ashtanga yoga, और उन्हें कह रहे हैं मेरे प्रिय उद्धव, ना तो इस अष्टांग योग से, not through this impersonal monism, और ना ही इस मायावाद तरीके से, not by some analytical study of the absolute truth, और ना ही कोई ज्ञान योग के माध्यम से परम सत्य के प्रति, not through your academic study of the Vedas, और ना ही आप विद्वानों की तरह जब वेदों का अध्ययन करें, not through your austerities, ना आपकी तपस्या से, or your charity, आपके दान से, or even acceptance of sannyas, यहाँ तक कि संन्यास ग्रहण करने पे भी, can one satisfy me as much as by developing unalloyed pure devotional service unto me. मुझे उतना संतुष्ट नहीं कर सकता जितना कि कोई व्यक्ति अमिश्रित शुद्ध भक्ति मेरे तरफ विकसित करे। Right? We came here when we were very simple. We came because we wanted to surrender to God, surrender to Krishna, and we were attracted to this idea of developing love and affection to God. Right? तो हम बहुत सरल थे, हम यहाँ आए क्योंकि हम कृष्ण को शरणागत करना चाहते थे, कृष्ण को सेवा करना चाहते थे। किसी तरह हम इस विचार से आकर्षित हुए कि अगर ये बहुत अच्छा होगा अगर हम किसी के प्रति इस तरह प्रेम में भक्ति विकसित कर सकें कृष्ण How से। we forgot all of that. तो हम ये सब चीज़ें कैसे भूल गए? We became very complex, very crooked, very no simplicity. हम बहुत जटिल हो गए, हम बहुत कुटिल हो गए, हमने अपनी सरलता खो दी। Then running after post and position, और हम पद और followers, money, और लोगों के पीछे और पैसे के पीछे भागने want to लगे। be seen as senior devotee, देखे जाना चाहते हैं कि हम वरिष्ठ भक्त pay हैं। obeisances, प्रणाम कीजिए मुझे, call me Prabhu, Maharaj. मुझे प्रभु कहिए, महाराज कहिए। This is the only happiness we're looking for. यही खुशी जिसके पीछे हम ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं। Who said Jiva Goswami said this is the stool of the Shihag, this pratishtha. किसने कहा था जीव गोस्वामी ने कि ये जो प्रतिष्ठा है ये Wanting to be recognized, appreciated as being some great personality. कि अपने आप को जाना जाना लोगों के बीच अपने आप कोई विशेष व्यक्ति के रूप में ये कोई बहुत Yeah. ये बहुत बड़ी बात है, यही सुख है आपके लिए।
My Gurudev said that this jnanis, everybody's proud of their knowledge. मेरे गुरुदेव कहा करते थे ज्ञानी सब ये लोग जो अपने ज्ञान में बहुत इनको अहंकार होता है. Right? Many times they interview people, they have so many books on the shelf behind them. कई बार ऐसे लोगों का साक्षात्कार लिया जाता है और आप देखेंगे वीडियो में उनके पीछे बहुत सारी किताबें पड़ी होती हैं. Like they read all of the books and they understood everything, you know. जैसे उन्होंने सारी किताब पढ़ी है सब कुछ समझते हैं. I think they're just getting like a painting and just like unrolling it, you know, and it looks like, sometimes you see it's like blowing, like the fan is blowing it. It's not the real books, you know. मुझे आप देख पाएंगे कई बार पीछे क्या करते हैं, किसी तरह का एक तस्वीर लगा देते हैं पीछे जिसमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी किताबें हैं पीछे, और कभी जब पंखा चलती है तो हवा से आप देखेंगे वो हिलने लगता है वो तस्वीर, तो समझ में आता है पीछे कोई किताब नहीं हो, असल में एक तस्वीर How the लगी है. books are blowing like this, you know. कैसे ये किताबें ऐसे उड़ कैसे रही? Something's wrong with that background, you know. बैकग्राउंड में कुछ But anyway, everyone's proud of their knowledge, their scholarship, कोई isn't बात it? नहीं, सभी लोग को बहुत गर्व है अपने ज्ञान का. They're feeling better than the peons, the uneducated people, वो जो है ये पियोन में जो काम करते हैं उनसे अपने आप को बेहतर समझते हैं. right? So my Gurudev said these jnanis, they're great cheaters. मेरे गुरुदेव कहा करते हैं ये ज्ञानी बहुत बड़े ठग हैं. They're the greatest cheaters सबसे बड़े ठग हैं ये. because they're just running after name and fame and the pratishtha और क्योंकि वो सिर्फ नाम और यश प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, in the name of bhakti. भक्ति के नाम पे. You see, so this is Krishna is not attracted to this thing. कृष्ण इन सब चीजों से आकर्षित नहीं होता. Neither is Krishna's pure devotees attracted to this thing. They're not running after this thing. और ना ही कृष्ण के शुद्ध भक्त इससे आकर्षित होते हैं, वो इसके पीछे नहीं भागते. Krishna says to Uddhava, only this pure bhakti कृष्ण कहते हैं उद्धव को सिर्फ ये शुद्ध भक्ति rendered to me by my true devotees, जो मुझे किया जाता है मेरे शुद्ध भक्त के द्वारा, only this brings me under control. यही मुझे नियंत्रण में ला सकता है. The supreme controller, परम नियंत्रण करता, he says, I can be controlled वो कहते हैं मुझे नियंत्रण किया जा only by सकता the है love of my devotees. सिर्फ मेरे भक्त के प्रेम के द्वारा. Krishna says, I cannot be controlled by persons engaging in this jnana or mystic yoga. कृष्ण कहते हैं मुझे नियंत्रण नहीं कर सकते ये लोग जो ज्ञान में हैं और योग के मार्ग पे, or Sankhya philosophy, सांख्य दर्शन में, or pious work, या अच्छे कर्म शुभ कर्म में लगे, or studying of the Vedas, ये वेदों के अध्ययन में लगे हैं, or these austerities and renunciation. त्याग, This will not control me. ये मुझे नियंत्रण नहीं कर पाएंगे. So all of these, there's many verses I have here, and basically it's Krishna just saying this. The only thing I'm interested is in pure unalloyed devotional service by my true devotee. और That's कई it. जगहों पे कई श्लोकों पे कृष्ण ने बार बार ये कहा है कि एक ही मात्र चीज जो मुझे रुचि करती है वो शुद्ध भक्ति मेरे शुद्ध भक्त के द्वारा. And it says any other gross or subtle desire that might be there, then will not be peaceful and happy and satisfied. और ऐसा कहते हैं कोई भी अगर हमारे अंदर सूक्ष्म या स्थूल रूप से हमारी कोई इच्छा है तो हम कभी आत्मा की संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाएंगे. Because Prabhupada explained, because your mind, your intelligence doesn't have a final resting place of pure loving devotional service to the Lord. क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं क्योंकि आपके मन के लिए कोई स्थिर जगह नहीं है जहाँ शुद्ध भक्ति भगवान के लिए शुद्ध भक्ति करने के लिए. And then Prahlad Maharaj in 7th canto Śrīmad-Bhāgavatam, प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं, he's preaching to his demon friends. अपने असुर मित्रों को बता रहे हैं. He said, my dear friends, O sons of the demons, मेरे प्रिय मित्र असुरों के बेटे, you cannot please the Supreme Personality of Godhead आप परम पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते, by प्रसन्न नहीं कर becoming सकते, perfect brahmanas पूर्ण ब्राह्मण बनकर, or demigods देवता बनकर, or great saints, साधु बनकर, or by becoming perfectly good in etiquette or vast learning. या पूर्ण रूप से निपुण बने अच्छी शिक्षा में. None of these qualifications can awaken the pleasure of the Lord, इसमें से कोई भी भगवान के प्रसन्नता को जागरूक नहीं कर सकता. not by charity, न दान से, austerity, तपस्या से, sacrifice, त्याग से, cleanliness, सफाई or taking vows या कोई शपथ प्रतिज्ञा लेने से can one satisfy the Lord. कोई भगवान को संतुष्ट कर सकता है. The Lord is pleased only if one has unflinching, unalloyed devotion to Him. कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है अगर किसी के पास अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति और शुद्ध भक्ति है भगवान के प्रति. Nothing material, कोई भी भौतिक नहीं,
unflinching and unalloyed devotion is required. अटूट और अमिश्रित भक्ति आवश्यक है। And that is the only way to please the Lord. और यही एकमात्र तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का। Without sincere devotional service, everything else is simply a show. बिना ईमानदारी से भक्ति के सभी कुछ बस एक दिखावा है। Just posing, बस दिखावा कर रहे हैं, pretending. नाटक कर रहे हैं, It's just a drama. बस बड़ा नाटक है ये। So without loving devotion and service to Krishna, बिना भगवान के प्रेम में सेवा के we're not going to fool Krishna. कृष्णा को हम बेवकूफ नहीं बना सकते। We may try to fool ourselves and fool other people, हम खुद को बेवकूफ बना सकते हैं, दूसरे लोगों को but बेवकूफ we बना सकते हैं। cannot fool and cheat Krishna. That's for sure. कृष्णा को ठग नहीं सकते, उनको बेवकूफ So नहीं we बना don't सकते। have that तो अगर हमारे ability पास to नहीं- please Krishna by this quality of devotional service. हमारे पास ये योग्यता क्षमता नहीं है इस शुद्ध भक्ति का कि हम कृष्ण को प्रसन्न कर And we सकें ultimately want to please Krishna. और हम अंततः कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, Then this standard is required. तो ये स्टैंडर्ड जरूरी है। So who will qualify us to come to this standard of devotional service? तो कौन हमें योग्य बनाएगा ताकि हम इस स्टैंडर्ड पे आ सकें शुद्ध भक्ति के। So Prabhupada in Bhagavad Gita, he's talking about Krishna saying the 4 types of people who come to Krishna. तो प्रभुपाद बताते हैं श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। Those who are looking for money, जो पैसे के लिए who ढूंढ try रहे to हैं, solve their suffering condition, जो दुख में परिस्थिति का समाधान करना चाहते हैं, those who are, inquisitive, philosophically, तो जिज्ञासु हैं, those who are looking for the absolute truth. और जो परम सत्य को ढूंढ रहे So हैं। Prabhupada says, even you have other desires. प्रभुपाद कहते हैं अगर आपके पास कोई और अन्य इच्छा भी है, That verse is there. Even you have desires. एक श्लोक है यहाँ तक कि आपके पास इच्छा Gross भी हो, or subtle desire. स्थूल या सूक्ष्म इच्छा, But Prabhupada said, if you associate with and hear from such pure devotees, this standard of pure devotional service, तो अगर आप वैसे भक्तों के साथ शुद्ध भक्तों के साथ संग करते हैं, उनके साथ श्रवण करते हैं, then gradually by the mercy of Sadhu Guru Vaishnavas, although you came with some type of gross or subtle desire, that will gradually get purified and you'll become pure devotee. तो उनकी कृपा से, उन संत भक्तों की कृपा से हो सकता है आप किसी भौतिक या सूक्ष्म या ठोस स्थूल इच्छा से आए हो, वो इच्छाएं शुद्ध हो जाएंगी और आप भी उस शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ जाएंगे उनकी कृपा So, से। whether you have no desires or you're full of desires, तो फर्क नहीं पड़ता आप पूरी तरह से इच्छाओं से or भरे हैं या you're आपके पास कोई desiring इच्छा नहीं है, liberation या मुक्ति की इच्छा है, or merging into the Lord, या भगवान में विलीन हो जाने की, whatever it might be, just come and render devotional service to the Lord कुछ भी हो, बस आओ और भगवान की भक्ति में लगो and know that only He can purify us and fulfill our desire. और बस इतना जानो कि वही हमारी इच्छा को पूरा कर सकते हैं और हमें शुद्ध कर सकते हैं। Dhruva Maharaj had so many material desires, ध्रुव महाराज के पास बहुत सारी भौतिक इच्छा थी and he was so determined, wasn't it, और वो बहुत दृढ़ थे उसके how पीछे, to fulfill his material desires. कैसे मैं भौतिक इच्छा को पूरा करूं। But his mother was like Guru said, you have to, only the Lord can fulfill your material desires. लेकिन उनकी माँ उनके गुरु के रूप में उनको बताया सिर्फ भगवान आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। Then on the way out to the forest, he met Narada Muni, his guru. और जंगल के रास्ते में वो अपने गुरु नारद मुनि से मिले And then the guru, he tested, he said, oh, this person is very determined with his material desires. और वो गुरु ने उनकी परीक्षा ली, हो ये व्यक्ति बहुत दृढ़ है अपनी भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए, But he gave him Vaishnava mantra. लेकिन उन्होंने उनको वैष्णव मंत्र दिया। So he got him somehow or other to chant, to follow the guru's instruction and to chant holy name. और किस तरह उन्होंने भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन किया और गुरु के निर्देश का पालन किया। So because he really followed the instruction, put faith in the guru's instruction, he got mercy from the spiritual master. और क्योंकि उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देश का पालन किया असल तरीके से, तो उन्होंने कृपा प्राप्त की अपने And आध्यात्मिक because गुरु he की chanting वैष्णव holy name, और क्योंकि उन्होंने पवित्र नाम कीर्तन किया, gradually, धीरे धीरे he became purified. वो शुद्ध हो गए। So much so that he realized and gave up all of the materialistic desires. इतना ज़्यादा शुद्ध हो गए, इतना ज़्यादा साक्षात्कार हुआ उनको कि उन्होंने अपने सारी भौतिक इच्छा त्याग So दी। by associating with and hearing from and seeing those representatives, pure devotees of the Lord, Krishna said, no one is more dear to me than these devotees. और उनके साथ संग करके, उनको देख के, उनके साथ श्रवण करके कृष्ण बताते हैं इन भक्तों से ज़्यादा प्रिय मुझे कोई भी नहीं है। So if we can serve them and please them, then Krishna will be more pleased. तो अगर हम उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं, तो कृष्ण हमसे और ज़्यादा प्रसन्न होंगे। Right? Just like, what's it?
Was it Narada Muni? Yeah, when he was a child. Narada Muni, right? His mother was a maidservant in previous lifetime. तो नारद मुनि के पिछले जन्म में वो एक दासी के पुत्र थे, He was just like 5-year-old boy 5 साल के छोटे बालक थे, living with his mother. They don't even know who was. Prabhupada said he doesn't even know who is his father. वो 5 छोटे से बालक थे, अपनी माँ के साथ रहते थे, उनको पता भी नहीं था उनके पिता कौन हैं। And somehow these Vaishnava Bhagavatas, they came to that house. और किसी तरह से वो वैष्णव महाभागवत उनके घर पे आए, And he and mother, they served nicely those Mahabhagavatas, Premi Bhaktas. और वो और उनकी माँ ने बहुत अच्छे से उनकी सेवा की, उन महाभागवतों की, प्रेमी भक्तों की। And they were very pleased with this mood, this humble service attitude. और वो बहुत प्रसन्न हुए उनके इस विनम्र भाव से, सेवा के भाव से। And they had a great compassion and mercy because of their behavior. उन्होंने बहुत करुणा और बहुत कृपा की उनके ऊपर, उनके रवैये की वजह से, The humble mood and seva. इस विनम्र सेवा भाव की वजह से। So they thought, okay, how Narada Muni explained, they thought how to bless them. तो नारद मुनि ने बताया, तो नारद मुनि को किस तरह उन्हें आशीर्वाद दिया फिर। So of course they were speaking Hari-katha Krsna-katha, chanting holy name. अवश्य वो हरि कथा, कृष्ण कथा और हरि पवित्र नाम का कीर्तन करते थे। And they let Narada just sit there and listen to that katha. और नारद वहाँ बैठ के बस उनकी कथा सुनते थे, And that chanting, he was also participating और कीर्तन में भी भाग लेते थे, by hearing from them. उनसे श्रवण करके, And he was taking the Maha Prasad. और महा प्रसाद देते थे। So this is the mercy, great mercy of Mahabhagavata, Premi Bhakta. तो ये बहुत कृपा है महाभागवत का, प्रेमी भक्त का। Even they don't know anything. He doesn't know anything. He's 5-year-old boy. यहाँ तक कि उनको कुछ भी नहीं पता था, 5 साल के बाद बालक थे वो। But because he got mercy from Premi Bhakta Mahabhagavata Vaishnava. लेकिन क्योंकि उनको कृपा मिली प्रेमी भक्त महाभागवत वैष्णव से, And then they prayed on his behalf, on their behalf. और उन्होंने उनकी तरफ से भगवान को प्रार्थना की। Then those prayers of Premi Bhakta to the Lord, Krishna says, those my devotees, pure devotees, they control me by their loving devotion and their seva. तो उस तरह से प्रेमी भक्त अगर भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान कहते हैं ये मुझे नियंत्रण करते हैं, ये प्रेमी भक्त। So whatever they ask for, I cannot say no. तो जो भी वो मुझसे कहते हैं, मैं उसको ना नहीं कह सकता। So this is secret of success. तो ये सफलता का रहस्य है। Is somehow or other try to please our spiritual master that he'll pray to the Lord on our behalf. किसी तरह से हम आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करें कि वो भगवान से प्रार्थना करें हमारे लिए, Even we don't really deserve it. यहाँ तक कि हम उसके लायक भी ना हो, But they're very compassionate, very merciful. लेकिन बहुत करुणा है उनके अंदर, बहुत कृपा है। If we have the right mood and we have nice relationship, behaving properly, अगर हमारा मनोभाव सही है, हमारा बर्ताव सही है उनके तरफ, trying to follow those instructions sincerely, putting faith in those instructions, उनके निर्देश का हम बहुत गंभीरता से, ईमानदारी से पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, then the prayers of the Krishna's pure devotees, they do not go unanswered. तो कृष्ण के शुद्ध भक्त की प्रार्थना कभी बिना जवाब के नहीं होती। Krishna knows who is his own man. कृष्ण जानते हैं उनके अपने व्यक्ति कौन And हैं। Krishna listens to those requests and prayers from his devotee. और कृष्ण अपने भक्त की प्रार्थना और उनका निवेदन सुनते हैं। Now we may not be so dear, हो सकता है हम उतने प्रिय नहीं हो, but our Gurudev is so dear लेकिन हमारे गुरुदेव बहुत प्रिय हैं, because of his commitment and seva. क्योंकि उनकी सेवा भाव से, उनकी So दृढ़ निश्चय if से, we serve our spiritual master, then we are serving the most dear to the Lord. तो अगर हम आध्यात्मिक गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो हम भगवान के सबसे प्रिय व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं। And gradually, by their mercy, we can also become dear. और धीरे-धीरे उनकी कृपा से हम भी उनके प्रिय बन सकते We हैं, can also become purified. हम भी शुद्ध हो सकते हैं। And like Dhruva Maharaj, when he finally got mercy from Guru Krishna, his spiritual master, it was so nice, so much nectar. He got a personal darshan of the Lord. और ध्रुव महाराज को पूरी कृपा, पूरी करुणा प्राप्त हुई अपने आध्यात्मिक गुरु की, तो इतना अद्भुत था ये कि उन्होंने सीधे साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त किया। And then he was thinking, what was I asking for before? He felt some shame, some shyness there. और फिर उनको शर्म आने लगी कि इससे पहले मैं किस चीज़ की मांग कर रहा था जब उनको प्राप्त हुआ। Right? He said, now I got a diamond, and then I realized I was just looking for some pieces of the broken glass. और जब मुझे ये हीरा प्राप्त हुआ, तो मुझे ऐसा लगा मैं तो बस टूटे हुए कांच को ढूंढ रहा था।
So he got higher taste. उनको ऐसे ऊंचा स्वाद मिला. We're not going to just grab higher taste on our own. Oh, I need some, like going shopping, oh, I need some higher taste, you know. जैसे कोई हम शॉपिंग करने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम ऊंचा स्वाद ऐसा जाके कहीं से खींच के ले आएंगे. ऐसा हम It's a अपनी तरफ से special नहीं कर सकते. mercy. ये विशेष कृपा के द्वारा हमें मिलेगा. So that's why everything is based on getting mercy इसलिए सब कुछ आधारित है कैसी कृपा मिल सके and understanding how to get it. और समझना कि हमें कृपा कैसे मिलेगी. Then the impossible can become possible. तब असंभव संभव हो सकता है. With mercy, impossible can become possible. कृपा से असंभव संभव हो जाएगा. Make sense? मतलब बनता है. Then, by those prayers, by their mercy, then we can become more and more qualified और फिर उनकी प्रार्थना से उनकी कृपा से हम और ज़्यादा योग्य बनते जाएंगे. and develop more and more desire to render this quality of devotional service. और हमारा और ज़्यादा इच्छा बढ़ता जाएगा इस गुणवत्ता का भक्ति सेवा कर सके हम. And giving up this so-called service to Maya. और हम इस नाम के सेवा को छोड़ सके माया की. But if you say, oh, I'm already devotee, I already love Krishna, you know, I've already understood everything. आप कहेंगे कि मैं पहले से भक्त हूँ, मैं पहले से कृष्णा से प्रेम करता हूँ, मैं पहले सब कुछ समझ चुका हूँ, I'm already doing devotional service. मैं पहले से भक्ति कर रहा हूँ. This is all just a very superficial, incomplete understanding. ये बस एक बाहरी और अपूर्ण समझ है हमारी. Devotee really means pure devotee. भक्त का असल मतलब शुद्ध भक्त. We're trying to become devotee. हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं. Right? This is mood. ये भाव है. Then by really devotee mercy, then by their prayers and their mercy, someday, some life, we may become really pure devotee. और उन शुद्ध भक्त की कृपा से, उनके प्रार्थना से हम भी किसी दिन शुद्ध भक्त बन सकते हैं. And then really please Krishna. असल में कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं. Then you get mercy of Krishna, mercy of Gurudev, mercy of Sadhu, then always will be peaceful and happy. तो अगर हमें कृष्ण का कृपा प्राप्त हो, साधु का, गुरुदेव का कृपा प्राप्त हो, हम हमेशा शांत और सुखी रहेंगे. And all these other things will just seem very insignificant, foolish. बाकी सारी चीजें हमारे सामने तुच्छ लगेगी, बहुत सारी मूर्खता लगेगा हमें ये सब. You'll look back and say, this is so childish, foolishness. और पीछे मुड़ के देखें, आप कहेंगे ये सब तो बचपना था, ये मूर्खता था, ये बेकार था ये सब कुछ. But unless we get higher taste, how we're going to look at it like that? जब तक हमें ऊंचा स्वाद नहीं मिले, हम उसकी तरफ इस तरह से देखेंगे. Because we have nothing to compare it to. क्योंकि हमारे पास तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है. So we need actual, undeniable experience. तो हमें असल अविश्वसनीय फल प्राप्त करना होगा. And without Guru Krishna's mercy, mercy of Śrīmad-Bhāgavatam, how will we have an undeniable spiritual experience or higher taste that we can compare it? तो बिना आध्यात्मिक गुरु, बिना श्रीमद् भागवतम की कृपा के कैसे हमें अविश्वसनीय फल प्राप्त होगा कि हम उसका अनुभव कर पाए और हमें ऊंचा स्वाद मिले ताकि हम नीचे की स्वाद को छोड़ सकें. Not theoretically. ये बस मौखिक रूप से. Theoretically is like, you know, getting the pizza, right? You order the pizza and they delivered the box. तो theoretically मतलब जैसे कि पिज़्ज़ा है और पिज़्ज़ा का हमें एक बॉक्स मिला है. Right? And on the top of the box they have a picture of the pizza, right? और पिज़्ज़ा के बॉक्स के ऊपर में पिज़्ज़ा का छवि होता है. Right? And then there's nothing inside of the box. और बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं. It's just a box looking like it's a pizza. एक बस आपके पास बॉक्स है जो पिज़्ज़ा के जैसा दिख रहा है. And they say, oh, that's your pizza, and you're chewing on the box, you know? It's like, oh, what's so great about pizza, you know? और आप जो है आपको कह रहे हैं ये पिज़्ज़ा है और आप सोच रहे हैं आप और उस बक्से को खा रहे हैं. आप सोच रहे हैं ये पिज़्ज़ा में इतना खास क्या है. This is like a theoretical ये है, pizza eating. ये इस तरह का इसको कहते हैं मौखिक रूप से खाना. So you need a real thing, tangible thing, practical thing, असल चाहिए, असल चीज चाहिए. undeniable thing. अविश्वसनीय जिसका हम अस्वीकार कभी हम ये न कर पाए. Then we can understand, oh, this is a higher taste, this is a better way of living. तो तब हम समझ पाएंगे ये ऊंचा स्वाद है, ये बेहतर जीवन जीने का तरीका है. The peace and happiness automatically will come to you. शांति और सुख अपने आप हमारे पास आएगा. Now you have something to compare. अब आपके पास कुछ है तुलना करने के लिए. So any points or questions? कोई सवाल या कोई बिंदु? There's so many things we had to discuss there, but anyway, this is what came out. बहुत सारी चीजें हमें चर्चा करनी थी लेकिन कोई बात नहीं, यही चीजें बाहर सामने आई. Yes. आज Hare Krishna Gurudev. I know. Is the instructions changing with faith increases? The instructions, right? Does the instructions of Gurudev changes when faith also increases?
Does the instruction of Gurudev, does it change as faith increases? It may. हो सकता है। तो प्रभु का सवाल है क्या गुरु का निर्देश बदलता है जिस तरह हमारा श्रद्धा विकसित हो? तो गुरुदेव बता रहे हैं हो सकता है। The first instruction is to nicely learn to hear. पहला निर्देश है कैसे अच्छे तरीके से श्रवण कर सकें। Because without nice hearing, we cannot even purify our consciousness. कि बिना अच्छे श्रवण के हम शुद्ध भी नहीं कर सकते अपनी चेतना। We cannot truly realize what does it mean to be, a soul, a servant of God, a servant of Krishna. हम असल में उस बात का साक्षात्कार नहीं कर सकते। हम आत्मा हैं, हम कृष्ण के दास हैं। So without, realizing that we're a soul, we're a servant of Krishna, and being motivated to serve Krishna, well, what other service can you do? तो जब तक हम इस बात का साक्षात्कार नहीं करते कि हम आत्मा हैं, हम कृष्ण के दास हैं और हमें कृष्ण के दास के रूप में कार्य करना चाहिए, तो हम और दूसरा क्या सेवा करेंगे जब हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे? That's why Prabhupada says Shravanam is first and most important aspect of devotional service. प्रभुपाद बताते हैं श्रवणम सब भक्ति का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण अंग है। And without properly doing Shravanam and getting the effects of that Shravanam, you cannot do any other of the ninefold processes of bhakti properly. और कहते हैं बिना सही तरीके से श्रवण करके और श्रवण के द्वारा उस तरह का लाभ प्राप्त किए बिना आप भक्ति के किसी भी अन्य भाग को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। Because we won't be in the right consciousness. क्योंकि हम सही चेतना में नहीं होंगे। And we won't have the right motivation. हमारा उद्देश्य सही नहीं होगा। So, you may try to increase all different savas, but if consciousness not changed and motivation not changed, then it's all superficial, artificial, just posing, pretending to be devotee, because the consciousness motivation not corrected. तो अगर आपकी चेतना और आपका उद्देश्य नहीं बदल रहा है तो बस आप सेवा बढ़ाते जा रहे हैं बाहर से, तो आप बस बाहर से ये सारी सेवा कर रहे हैं और आपकी चेतना अभी भी वही है, आपका मन अभी भी, मानसिकता अभी भी वही है। That's why Prabhupada is just chanting Hare Krishna Mahamantra. And they're hearing that mantra, and because Krishna directly there, then gradually it's purifying their consciousness. और उन्होंने जब ये हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन किया, क्योंकि कृष्ण उस कीर्तन में मौजूद थे, तो उन्होंने धीरे-धीरे उनकी चेतना को शुद्ध कर दिया उस शब्द ने। And they're saying, Prabhupada telling, you're suffering because you don't know God and you're not serving God. प्रभुपाद ने फिर उनको बताया, आप भगवान को नहीं जानते हैं, इसलिए आप दुख भोग रहे हैं। So now you chant Hare Krishna Mahamantra. अब आप जप कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र। So first Shravanam, then faith purification and faith develops. Now Kirtanam, now you chant, now you speak about Krishna. तो पहले श्रवणम जिससे शुद्धिकरण और श्रद्धा हमें मिल सके, तब आप कीर्तन करेंगे। Like this, step by step. क्रमानुसार। Right? Remember I was telling you, I think yesterday, that I kept asking Gurudev, I should do some other seva. याद है कल ही हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि मैं गुरुदेव से अक्सर पूजा करता था। But he wasn't giving me other instructions. लेकिन मुझे और कोई निर्देश देते ही नहीं थे। He just kept emphasizing hearing. बस हम मुझे श्रवण करने के लिए कहते थे। So I'm asking, I'm availing myself, but he's saying no. You just put your energy and learn how to hear properly. Let the katha enter inside of you and get all the effects from that hearing. Then we may give you some other thing. तो मैं अक्सर उनको पूछता रहा, मैं बोलता रहा, मैं उपलब्ध हूँ और भी अन्य सेवा करने के लिए, लेकिन वो हमेशा इस बात पे जोर देते रहे, पहले अच्छे से श्रवण करना सीखो, अपनी चेतना को शुद्ध करो, अपने आप को योग्य बनाने का प्रयास करो, तब आप जाकर के सेवा अन्य चीज को सही तरीके से करो। And then after some time, then Gurudev said, okay, now you work in the reception area. और कुछ समय के बाद गुरुदेव ने मुझसे कहा कि आप जाकर रिसेप्शन में जाके काम कीजिए। And try to help the devotees. और भक्तों की मदद करने का प्रयास कीजिए। So then I just started going to the reception so many hours in the day and trying to meet the new people and preaching to whoever sitting around there. और इस तरह से मैं जो है रिसेप्शन में बैठ के अपना समय ज़्यादातर समय अपना वहाँ देने लगा और जो भी नए भक्त मुझे यहाँ वहाँ मिलते थे उनको मैं प्रचार करके उनकी मदद करने का प्रयास करने लगा। And every day hearing from him. और प्रतिदिन मैं उनसे श्रवण करता था। And studying, reading, learning. और पढ़ रहा था, सीख रहा था, trying to understand it. समझने का प्रयास कर रहा था। Quoting all the shastra, then I'm researching why is he using these quotes to make these points. So I try to really go deep to understand how and what is he preaching. और वो जब किसी श्लोक का कोटेशन करते थे कहीं से, तो मैं उसको जाके रिसर्च करता था, खोजबीन करने का प्रयास करता था कि वो इस बात को साबित करने के लिए इस अलग-अलग शास्त्रों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इस बात को मैं गहराई से समझने का प्रयास करता था।
Then with that, as I was getting purified and learning to understand the tattva, then when I would read Śrīmad-Bhāgavatam, I would try to pull out, I would call them like golden nuggets. Because I never saw those things before. So then I started to just accumulate all of these tattvas that are there within Prabhupada's books and teaching. और जब मैं इस तरह से अपने मेरे शुद्धिकरण बढ़ने लगा, मेरी समझ बढ़ने लगी, और इस तरह अनेक शास्त्रों से मैं देखकर मेरी जब योग्यता बढ़ने लगी कि मैं तत्व को किस तरह ढूंढ सकूं, फिर मैंने जब श्रीमद्-भागवतम पढ़ना शुरू किया तो उसके बीच से मुझे जो भी तत्व कुछ मिलते थे तो मैं देख पाता था। वो मैंने ये कई बार पढ़ा, लेकिन मुझे ये जो है तत्व कभी इसके अंदर से मिले नहीं, क्योंकि श्री भगवान बहुत सारे तत्वों के बारे में बात करते हैं श्रीमद्-भागवतम। And then I would listen to his tapes also, and I would see which shlokas he's quoting to back up those points. और मैं जो है अक्सर उनके रिकॉर्डिंग सुनता था, टेप सुनता था, ये जानने के लिए कि इस बात को साबित करने के लिए वो कौन से शास्त्र से कोटेशन देते थे। And this way I was trying to really understand it. और इस तरह से मैं उसको असल में समझने का प्रयास किया। And different questions or things that I was trying to understand, then I go to the Bhagavatam class, and Gurudev every day would explain how to reconcile and understand everything by his mercy. और प्रतिदिन जब मेरा कोई सवाल होता था, मेरा कोई संदेह होता था, मैं किसी चीज़ को समझने का प्रयास कर रहा होता था, मैं श्रीमद्-भागवतम क्लास में जाता था और गुरुदेव अपनी कृपा से सारी चीज़ों को एक साथ एक जगह जमा करके मुझे ये समझा देते थे उस सवाल का जवाब। And then I saw that you can't just do any damn thing and then just go to the class and hear nicely. और मैंने एक चीज़ देखा कि आप कुछ भी ऐसे दिन में बकवास करके जाके श्रीमद्-भागवतम क्लास में बैठ के अच्छे से श्रवण नहीं कर सकते हैं। So then I said, well, if my only savor is to hear from Gurudev, I should try my best to be in the best possible consciousness to do that seva of hearing from him. तो मैंने ये समझा कि मेरी अगर एकमात्र सेवा है गुरुदेव से श्रवण करना, तो मैं अपना श्रेष्ठ करने का प्रयास करूँ अन्य सारी गतिविधि, ताकि मैं तैयार हूँ जब मुझे श्रवण करने की सेवा हो मेरे गुरुदेव से। So I would try to chant as sincerely and seriously as I could. और मैं जितना गंभीरता से, जितनी ईमानदारी से हो सकता मैं जप करने का प्रयास करता था। Very attentively and just really trying to associate with Krishna and purify my heart and my mind, my consciousness, so I would be ready to hear in the class. बहुत ही ध्यान से सावधानी पूर्वक जप करने का प्रयास करता था, कृष्ण के साथ संग करने का, ताकि मैं स्वयं को शुद्ध कर सकूं, स्वयं की योग्य बना सकूं, ताकि मैं जाके क्लास में श्रवण कर सकूं। So then I realized you have to adjust your lifestyle in order to properly hear and chant. तब मैं समझा कि असल में श्रवण करने के लिए और कीर्तन करने के लिए मेरे अपने पूरे जीवन शैली को मुझे व्यवस्थित करना पड़ेगा। And then when I didn't do that, I could not hear and get the benefit as much. और जब मैं ये सब सही तरीके से नहीं करता था, तो मैं सही तरीके से श्रवण करके उसका फायदा नहीं उठा पाता था। And when I took it more seriously and adjusted my lifestyle and prepared myself for hearing, then it was like heaven and hell difference of hearing and the effects of the hearing. और जब मैंने अपनी जीवन शैली बदल के अपने आप को थोड़ा व्यवस्थित करने का प्रयास किया, तो जब मैंने उसके बाद श्रवण के लिए खुद को तैयार किया, उसके बाद जो मुझे श्रवण का फायदा मिला, तो मुझे मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। But all of those adjustments and things I was coming to understand was so how I can do the hearing seva more properly as best as possible. तो मैं ये सारा कार्य, सारा जीवन शैली और सारा प्रक्रिया करने का प्रयास कर रहा था, ताकि मेरी जो सेवा है श्रवण का, उसको मैं सबसे श्रेष्ठ तरीके से कैसे कर सकूं जो संभव है उस समय। And any benefit or anything that I came to understand and realize mercy that I got from my spiritual master, I honestly believe it was because I did that one thing. और जो भी कृपा, जो भी फायदा मुझे मिली आध्यात्मिक जीवन में, जो मैं ईमानदारी से कह सकूं, क्योंकि मैंने वो एक चीज़ सही तरीके से की अपने गुरुदेव से। I tried to be like maybe for the first time in my life a really good student. हो सकता है पहली बार मैं अपने जीवन में एक अच्छा छात्र के रूप में था। Before I just do enough just to get pass the exam, और उससे पहले जब मैं अलग-अलग क्लास में था, तो मैं बस पास में करने के लिए, परीक्षा में पास करने के लिए उतना ही मैं पढ़ाई करता था। I didn't have any heart and soul was into that thing, मैं पूरा अपना हृदय, अपना मन नहीं लगाता था पढ़ाई में। I used to play sports in the university, मैं विश्वविद्यालय में जो है स्पोर्ट्स खेलता था। So you have to keep your grades up to a certain standard in order to be able to play the sports. तो आपको जो है कुछ पर्याप्त ग्रेड पाना होगा ताकि आपको स्पोर्ट्स खेलने की अनुमति मिल सके। It's not exactly like pure devotional learning, you know what I mean? ऐसा नहीं कि पूरे शुद्ध भक्ति से मैं वहाँ पे सीखने का प्रयास करता था। But here was a subject matter that was really food for my soul, which was very interesting, and
so beneficial. So that's the only thing really that attracted me. तो यहाँ एकमात्र मुझे वो चीज़ मिली जो असल में सीखने लायक थी, मेरी आत्मा के लिए भोजन था, जो मुझे रुचि दे रहा था और जो मुझे असल में फ़ायदा दे रहा था। तो मुझे लगा ये वो विषय है जहाँ मुझे अपने सारा समय और ऊर्जा लगानी चाहिए। Previously, I read many books, and I was into knowledge and trying to get knowledge and trying to improve myself. और उससे पहले मैंने कई सारी किताबें पढ़ने का On my प्रयास own, किया, independently. ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, अपने आप को उन्नति करने के लिए स्वयं की आज़ादी से, स्वयं स्वतंत्र रूप से। And in some ways, it's all just like stepping stone. और किसी तरह से ये सब जो है अलग कदम कदम में मेरा सहयोग किया। But it was always like something was missing. लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाता था उनके बीच। And that's the point, the essential point of Krishna and Krishna Bhakti, that was missing from everything else that we were studying and reading and trying to understand and practicing. और सबसे महत्वपूर्ण बात, कृष्णा जो भी मैं जीवन में सीखने का प्रयास कर रहा था, जो भी अध्ययन कर रहा था, जो भी ज्ञान लेने का प्रयास कर रहा था, उन सब में एक ही चीज़ हमेशा छूट जाती थी, वो कृष्णा जो कि मुझे यहाँ मिली। So if you put Krishna in the center, then you get everything. तो अगर आप कृष्णा You understand everything by His mercy. कृष्णा को केंद्र में रखेंगे तो आप सब कुछ समझ पाएंगे, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा उनकी कृपा से। It says, you can have many zeros, but if you don't put a one in front of it, it's all useless, right? ऐसा कहते हैं आपके पास अगर बहुत सारे जीरो हैं, लेकिन उसके आगे आप एक नहीं रखेंगे तो सारा जीरो बेकार है। Prabhupada laughing, he said, you people in the Kali Yuga are so unfortunate that someone's giving seminar on zero and you're spending thousands of dollars to go to the seminar, प्रभुपाद हंसकर कहते थे, आप कलियुग के लोग इतने दुर्भागे हैं कि कोई यहाँ पे सेमिनार दे रहा है जीरो शून्य के ऊपर और आप लोग हजारों रुपया खर्च कर रहे हैं उस सेमिनार में जाने के लिए, जीरो के बारे में सुनने Some के लिए। esoteric, interesting, seminar on zero, but it's thousands of dollars to go, let's go, कुछ रोमांचक रुचिकर हम सेमिनार सुनेंगे सुनने के बारे में और उसमें हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं उस सेमिनार में जाने। And then Prabhupada says, then here we're giving you directly, Krishna, the absolute truth, the source of all knowledge and intelligence for free. And you're so foolish, unfortunate, you're like, I'm not so interested, और यहाँ पे हम सबसे परम सत्य, सबसे सही चीज़ दे रहे हैं कृष्णा, और यहाँ लोग उसको लेने के लिए वो भी फ्री में, और कृष्णा उसको लेने के लिए तैयार, और लोग उसको लेने के लिए तैयार हैं। इतने मूर्ख हैं लोग। This is Kali Yuga. ये है कलियुग। Bright example of the Kali Yuga. ये सब जीता जागता उदाहरण है कलियुग का। All right? ठीक है। One time I asked my Gurudev, I said, when the spiritual master asking you question to get instruction, is the Guru just testing you? Or is that really what Krishna wants you to do? तो एक बार मैंने एक सवाल पूछा गुरुदेव से कि अगर कोई शिष्य गुरु से सवाल पूछता है कि कृष्णा मुझसे क्या चाहते हैं, तो क्या वो जब वो उत्तर देते हैं तो क्या वो गुरु हमारे पास परीक्षा लेना चाहते हैं कि वो उसको करेंगे या नहीं, या फिर वो कृष्णा हमसे वही कराना चाहते हैं? Because wasn't Dhruva Maharaj, his guru Narad Muni tested him. जैसे ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने, उनके गुरु ने उनको परीक्षा ली पहले। He wanted to see how serious is this boy, वो देखना चाहते थे ये बच्चा कितना गंभीर है। Then he said, oh, I tested him. Now I realize, oh, he is very determined. और जब उनकी परीक्षा ली उन्होंने, तब उन्होंने समझा कि हाँ ये बच्चा बहुत गंभीर है, बहुत दृढ़ निश्चय है इसका। So when I read that, I was thinking, well, maybe the guru is just testing you. तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने सोचा कि हो सकता है गुरु मेरा परीक्षा लेना चाहते हैं। But he actually wants you to do something else, or he has some other thing to tell you. So I thought, maybe he's just testing me. Maybe I'm getting cheated somehow. तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है मैं भी ठगा जा रहा हूँ। अगर गुरु मुझसे कुछ कहेंगे तो हो सकता है वो मेरे परीक्षा लेने के लिए मुझे कह रहे हो सकता है असल में मुझसे कुछ और चाहते हैं। तो मैं भी सोचता था कि ऐसे मेरी परीक्षा ली जाएगी। So I asked my Gurudev this question. तो मैंने गुरुदेव से ये सवाल पूछा। And Gurudev said, it's already too confusing for everybody. मेरे गुरुदेव ने उत्तर दिया, अरे बाबा ये सब पहले से ही बहुत ज़्यादा भ्रमित है आपके लिए। So just follow it as it is. जैसा कहा जा रहा है वैसा ही पालन करो। I'm not going to test you and confuse you. You're already confused. Just take the instruction and follow it. आपको परीक्षा नहीं लिया जा रहा है, आपको टेस्ट नहीं किया जा रहा है, आप पहले से ही बहुत भटके हुए हैं। आपको बताया जा रहा है उसको यथारूप में पालन कीजिए सीधा से।
Oh, maybe, Gurudev said like this, but maybe he wants me to do some other thing, right? You're already mental case, और गुरुदेव ने मुझसे ऐसा करने को कहा, लेकिन हो सकता है वो मुझसे कुछ और करवाना चाहते थे। आप पहले से ही मेंटल केस हैं, आपको गुरुदेव वही बताएंगे जो आपको करना है। So Gurudev said, just follow it, don't complicate it. तो गुरुदेव ने कहा बस पालन करो इसको और जटिल मत बनाओ। Then if the Guru wants to add on to it or change it, automatically Guru and Krishna will do it in due course of time. Otherwise, just follow whatever he's telling you. That's perfect for you. और गुरु उसको जोड़ना चाहते हैं, कुछ घटाना चाहते हैं, तो वो आपको बताएंगे समय के साथ। और अगर नहीं बता रहे तो वही पालन कीजिए जो आपको बताया गया है पहले से। I remember one of my French godbrothers, he was going back to France and he went to see Gurudev to ask for some instruction. मुझे याद है मेरे फ्रांस के गुरु भाई थे, जब वो फ्रांस जा रहे थे तो वो गुरुदेव से आकर कुछ निर्देश मांगना चाहते थे, अपने निर्देश में कुछ और बदलना है तो पूछना चाहते थे। Then when the devotee came out, he was like so blissful, happy, और वो भक्त जब बाहर आया वहाँ से तो पूरी तरह आनंदित था, बहुत खुश था वो। I was thinking, what is this instruction he got from Gurudev, मैंने सोचा इसको गुरु से ऐसा क्या निर्देश मिला, इतना खुश है। He came out like it looked like the sun, he looked all bright. और बाहर आया सूरज के जैसा चमक रहा था वो। So then he said, I got my instruction from Gurudev, उसने कहा कि मुझे गुरुदेव से निर्देश मिला है। I said, what was that instruction? मैंने कहा क्या निर्देश मिला है? And he said, Gurudev told me गुरुदेव ने मुझे कहा every day प्रत्येक दिन read one shloka of the Bhagavad Gita. भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ो। And he was completely satisfied, और वो पूर्ण रूप से संतुष्ट था। And Gurudev knows this is the only thing this person can do, गुरुदेव जानते थे यही एक काम है जो ये आदमी कर पाएगा। So Krishna knows, Guru knows, he said, just try to do this thing, कृष्ण जानते हैं, गुरु जानते हैं, बस वही करने का प्रयास कीजिए। And he said, this is my instruction. और वो कहता था ये मेरा निर्देश है। Every day I'll read one shloka of Bhagavad Gita, हर दिन मैं एक श्लोक पढ़ूंगा भगवद गीता का। So everybody is not on the same platform. तो सभी लोग एक स्तर पे नहीं हैं। Everyone has different level of adhikā qualification. सभी का अधिकार अलग अलग है, सभी की योग्यता अलग अलग है। Spiritually and material. आध्यात्मिक रूप से और भौतिक And रूप से। everybody has different nature. और सभी का स्वभाव भी अलग अलग है। But the Guru knows Krishna's intention for us according to our qualification or nature. लेकिन गुरु जानते हैं कृष्ण का हमारे लिए क्या उद्देश्य है, हमारे स्वभाव और हमारे गुण के आधार पर। So bona fide Guru Prabhupada says he knows the psychophysical nature of the student. प्रामाणिक गुरु मनोवैज्ञानिक स्वभाव जानते हैं शिष्य का। He knows his qualification or disqualification. उसकी योग्यता और अयोग्यता दोनों। And he knows his nature, what he's capable of, what is his God-given talent. उसका स्वभाव, उसके चीज के उसमें क्या क्षमता है और भगवान ने उसको क्या शक्ति दी है। So he'll engage you accordingly. और उनको उसी रूप में लगाएंगे गुरु। Prabhupada said, sometimes the Guru said, you be a pujari, you be a teacher, you do business for Krishna, you be a preacher, right? All kinds of seva is there. प्रभुपाद बताते हैं गुरु कई बार कहेंगे आप पुजारी का सेवा कीजिए, आप जो है शिक्षक बनिए, आप बिजनेस कीजिए, बहुत सारी तरह की सेवाएं हैं इस तरह से। Krishna told Arjuna, you're Kshatriya, you're warrior, you go fight. कृष्ण ने अर्जुन को कहा तुम क्षत्रिय हो, तुम जाओ और युद्ध करो। According to your nature, you're going to fight anyway. अपने स्वभाव से तुम युद्ध करोगे ही। But just do it for me, make it spiritual. अभी मेरे लिए करो, आध्यात्मिक बनाओ इसको। That's the Daivi Varnashram. ये है दैवी वर्णाश्रम। Means acting according to the order and quality of your life, but in service to God, in service to Krishna. यानी आपकी क्षमता और आपके गुण के जीवन के आधार पे आप कार्य करें, लेकिन इसको कृष्ण की सेवा के रूप में करें। So I was fortunate because I really had faith and understanding of what my future was before I even came to ISKCON. तो मैं बहुत भाग्यवान था कि मुझे पहले से ये श्रद्धा और ये बुद्धि मुझे प्राप्त हो चुकी थी कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरा भविष्य किस तरह से होगा, मुझे पहले अनुभूति हो चुकी थी ISKCON में आने से भी पहले। Somehow Krishna gave me that intelligence and faith and understanding. किसी तरह कृष्ण ने मुझे ये बुद्धि, ये श्रद्धा और ये समझ पहले ही दे दी थी। So when I met Srila Govinda Swami, he just spontaneously told me exactly the same thing. और जैसे मैं अपने गुरु श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज से मिला, तुरंत ही उन्होंने वही सत्य मुझे कह दिया। So then I could understand this is the same instruction from Krishna.
तो मैं समझ पाया ये वही निर्देश है जो मुझे कृष्ण से आ रहा So है। now it's confirmed inside and outside. तो अब ये पुष्टिकरण हो गया बाहर से भी और अंदर से भी। So what Krishna wants you to do, he'll give you intelligence and faith, and then the Guru will prove to you, Krishna will prove to you, because the Guru will tell you exactly the same thing. और कृष्ण आपको बुद्धि देंगे, आपको श्रद्धा देंगे भीतर से, और गुरु कृष्ण आपको उसी बात की पुष्टि करेंगे बाहर से, और इस बात को सही साबित करेंगे कि ये कृष्ण से आ रहा है। So intelligence and faith and confirmation, that comes from the Lord within the heart. तो बुद्धि और श्रद्धा परमात्मा हमारे हृदय से आती है। Otherwise the Guru tells you something, you're like, how do I know that came from Krishna? वरना गुरु आपको कुछ करने को कहेंगे, आप कहेंगे कैसे मैं समझूं ये कृष्णा से आ रहा है? How do you connect that instruction from the Guru to Krishna? कैसे आप उस निर्देश को करेंगे, संपर्क जोड़ेंगे गुरु और कृष्ण के साथ? So without intelligence and faith in Krishna and in the Guru, you cannot. बिना बुद्धि और बिना श्रद्धा के कृष्णा और गुरु में आप उसको नहीं कर पाएंगे। You may say sentimentally, intellectually, okay, that's my instruction, I'll try to do it, right? आप हो सकता है भावपूर्व में या थोड़ी बुद्धिमत्ता से ऐसे कहें कि हाँ ये मेरा निर्देश है, मैं इसको So करूंगा। many obstacles come, so many difficulties come, तो जब परेशानी आएगी रास्ते में, रुकावट आएगी रास्ते so में, many challenges come, बहुत सारी चुनौती आएगी जब आप निर्देश का everybody's पालन करेंगे। opposing you, criticizing you, trying to kill you, drag you down, right? लोग आपको नीचा गिराने का प्रयास करेंगे, आपके खिलाफ जाएंगे, सब लोग आपके खिलाफ जाएंगे, आपको मारने का प्रयास करेंगे और आपके दोष निकालेंगे। So apparently nothing looks like it's working nicely, isn't it? तो बाहर से देखने में लगेगा कुछ भी सही तरीके से नहीं जा रहा है। So immediately Maya will say, look at all of this. तो तुरंत माया कहेगी देखो क्या हो रहा है, Huh? Why is it happening like this? ऐसा क्यों हो रहा है? How do you know that really is your Guru? तुमको कैसे पता कि वो तुम्हारे गुरु हैं? And that the instruction he gave you, how you know they came from Krishna? Why all this mess is here now? Why all this difficulty is there? अब कैसे समझ पाएंगे जो आपको निर्देश मिला वो असल में कृष्णा से मिला, जो आपको गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है, वरना आप ऐसे मुसीबत में, ऐसे दुविधा में क्यों फंसे हुए हैं? Why it's not easily, naturally just going? क्यों इतनी आसानी से स्वाभाविक रूप से रास्ता नहीं जा रहा Why है? so difficult? So many challenges, obstacles, right? इतनी मुश्किलें क्यों, इतनी चुनौती क्यों, इतना रुकावट क्यों आ रहा है रास्ते में? So immediately Maya will start whispering in your ear, I don't know about this. तुरंत ही माया आपके कान में जो है फुसफुसाने लगे, मुझे पता नहीं ये सही है या नहीं। Look at all these troubles coming to you now. देखो तुम्हारे इस जीवन में क्या क्या मुसीबतें आ रही Obstacles, हैं, challenges, रुकावटें और चुनौती, criticism, आपके ऊपर दोष निकाला जा रहा है, opposition. चुनौती आपको विरोध inside, किया जा रहा है, outside. और भीतर से बाहर से विरोध हो रहा है, Then you get shaky. तब आप हिलने लगेंगे। How do I know I'm not making bad decision? कैसे मैं समझूं कि मैं गलत फैसला तो नहीं ले रहा? Your faith, our faith will be tested. हमारी श्रद्धा का परीक्षा लिया जाएगा। So if we don't really understand what it means to depend on Krishna and Guru and their instruction and taking shelter there, how you pass the test? तो अगर हम ये समझ नहीं पाएंगे कैसे कृष्ण के ऊपर निर्भर होना है, गुरु कृष्ण के निर्देश के ऊपर निर्भर होना है, उन पर श्रद्धा विकसित करना है, आप इस परीक्षा को कैसे पास कर पाएंगे? Because our faith will be weak. क्योंकि हमारा श्रद्धा बहुत कमजोर है। Like when you grow a plant, right? Originally when it's coming up, it's very like a tender creeper, right? तो जैसे कोई पौधा जब बड़ा होता है तो शुरुआत में वो काफ़ी कोमल होता है और काफ़ी उतना मजबूत नहीं होता। It's coming up, but it's not strong yet. वो बढ़ रहा है लेकिन अभी मजबूत नहीं है। Right? Then it needs water and the sunlight, तो उसको जल और सूर्य की रोशनी की and जरूरत it होती है needs a fence. You have to put the protection around it. और उसके चारों तरफ बाड़ लगानी पड़ती है। So the Guru association with devotees, Vaishnava, this is like a fence. It will protect your kripa. तो ये गुरु और वैष्णव का संग, ये एक चारों तरफ आपके ऊपर एक बाड़ लगाया गया है जो आपको रक्षण करेगा। And then they'll add the sunlight and the water to make you grow. और ये जल और सूर्य की रोशनी डाली जाएगी ताकि ये पौधा ऊपर बढ़ So सके, your faith, your bhakti will increase. ताकि आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति ऊपर बढ़े। And then if some weed is coming, something you don't understand, right? Then the expert gardener will just pick up that weed. Oh, this is not going to help you. और जैसे ही कोई उपशाखा उसमें बढ़ने लगेगी, क्योंकि गुरु जो है निपुण माली हैं, तो वो उसको देखेंगे और उसको उस उपशाखा को वहाँ से बाहर निकाल देंगे। I always tell the story, my mother was like to plant something, you know, so I was helping one day. I have to help the mother, you know.
तो मेरी माँ जो है अक्सर कुछ ना कुछ पौधा लगाने में उनको बहुत रुचि थी, तो मैंने सोचा एक बार मैं उनकी मदद करूँगा पौधा So I'm लगाने में। just weeding today, you know. मैंने सोचा मैं थोड़ा आज उपशाखा बाहर So I निकालूँ। just start like pulling all of these things out, you know. My mother's like, "What are you doing? You know, those are the plants, you know. It's not the weeds, you know." तो मैं जाके वहाँ गया, सब कुछ उखाड़ के फेंकने लगा, तो मेरी माँ ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, वो तो पौधा तुमने उखाड़ दिया सारा। It was green, you know. I thought it was a weed, you know. वो दिखने में हरा लग रहा था, मुझे लगा यही उपशाखा है, मैंने निकाल दिया। That's nice. You want to help me, but you don't know what are you doing, you know. ये अच्छा है, तुम मदद करना चाहते हो, लेकिन तुमको पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। Right. So a lot of these weeds are very subtle. It's very difficult to recognize it. तो बहुत सारे ऐसे जो खरपतवार हैं, ये बहुत मुश्किल है इनको पहचान पाना। So the Guru is trying to protect you in your faith. तो गुरु हमारे श्रद्धा He's की रक्षा trying to करना hear चाहते and हैं। chant to try to, you know, make you stronger and give you knowledge and faith and develop you, right? और श्रवण कीर्तन के माध्यम से आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं, आपके अंदर श्रद्धा देना चाहते हैं, आपको और मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि और ऊपर उठ सकें। But when you put the sun and you put the water, the weed will also come up. लेकिन जब सूर्य की रोशनी है कि जल डाला जाएगा तो वो शाखा भी बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। Right? Some pride, some different things will come up. अहंकार और ये सब दम्भ, ये सब कुछ धीरे धीरे बाहर Thinking आएगा। we're really devotee, सोचेंगे हम भक्त हैं, diplomacy, Indian politics, all kinds of things will come out. भारतीय राजनीति, ये सब बहुत सारा चीज बाहर आएगा। This is some type of weed is there, you ये know. सब एक तरह का उपशाखा है। You go for some other desire, Yeah, not the हमारा pure कोई bhakti. भक्ति के अलावा हमारा कोई और अच्छी इच्छा भी So the प्रकट होने लगेगा। Gurudev will say, will protect you. तो गुरुदेव जो है कहते हैं वो आपको And रक्षा करेंगे। he'll try to take out this weed so that you can keep going for this pure bhakti. वो इन उपशाखा को बाहर निकालते रहेंगे ताकि आप जो है शुद्ध भक्ति की तरफ आगे बढ़ सकें। Because we don't recognize it. कि हम इसको पहचान We नहीं cannot पाते, see it. हम उसको देख नहीं पाते हैं। That's why we need a guru. इसलिए हमें गुरु चाहिए। And a guru, unless he's expert at that work, how can he really help you? और अगर गुरु उसमें निपुण नहीं है, वो आपकी मदद कैसे करेगा? Not possible. संभव नहीं है। So you must be empowered and you must be authorized. तो आपको अवश्य सशक्तिकरण प्राप्त हुआ होना चाहिए और आपको अधिकार होना चाहिए। And that intelligence and faith that comes from Krishna, Krishna Parampara. और ये बुद्धि और ये श्रद्धा कृष्ण परंपरा से आती है। Prabhupada says, unless you're empowered and authorized by Krishna, Krishna Parampara, no one really can be preacher. प्रभुपाद बताते हैं अगर आप कृष्ण परंपरा के द्वारा सशक्तिकरण आपको प्राप्त नहीं हुआ, आपको अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, कोई भी गुरु परंपरा नहीं Or बन सकता। guru. गुरु नहीं You बन have to be सकता। empowered to be able to do the work. आपको सशक्तिकरण प्राप्त होना चाहिए ताकि आप उस कार्य को कर सकें। The effect must be there, प्रभाव होना चाहिए आपके। right? Prabhupada said the speaker, the guru, preacher must be bona fide, qualified, authorized, but the hearer must also be qualified. प्रभुपाद बताते हैं गुरु को है प्रमाणिक और सही आधिकारिक होना पड़ेगा और वक्ता को भी जो है और श्रोता को भी योग्य होना पड़ेगा। Then you can become impregnated with Krishna consciousness. तब कृष्ण भावनामृत का बीज आपके अंदर डाला जा सकता है। So the Prabhupada said this is an exacting science. तो प्रभुपाद बताते हैं ये एक विशेष विज्ञान है। You cannot understand this by a normal materialistic way. आप इसको भौतिक तरीके से समझ नहीं पाएंगे। It's beyond subtle. ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। Even subtle is three-dimensional. यहाँ तक कि सूक्ष्म 3 आयामों में होता है। This is spiritual. ये तो आध्यात्मिक That's a Brahma-bhuta ये existence. ब्रह्मभूत अस्तित्व पे है। That's soul, transcendental platform. ये आत्मा दिव्य स्तर पे है। But my Gurudev said, but you were never there before. You've not moved in that side before. मेरे गुरुदेव कहा करते हैं आप वहाँ कभी नहीं थे, आप इस रास्ते में कभी नहीं आगे बढ़े हैं। So unless somebody from that side comes and takes you by the hand and brings you and shows you, how you'll understand it? तो जब तक कोई उस जगत से यहाँ आकर आपकी तरफ हाथ बढ़ा के आपको उसकी तरफ लेके न जाए, आपको वहाँ तक खींच आगे ना बढ़ाए, आप कैसे इस चीज़ को समझ पाएंगे? You have to be invited to the party. आपको पार्टी में आपको निमंत्रण मिला होना चाहिए। You don't just climb in the kitchen window, you know.
आप किचन की खिड़की से ऐसे चढ़कर अंदर नहीं घुस सकते You know, crash the party, you know. आप पार्टी के अंदर ऐसे जबरदस्ती नहीं घुस सकते And you come out of the kitchen, you get blood from the glass, and they're like, you know, people are inside having a nice party. It's like, who's this madman, you know? आप जो है खिड़की के अंदर से कांच तोड़ के घुसने का प्रयास कर रहे थे और कांच से आपका खून बह गया और आप पार्टी के अंदर घुस गए। लोग देख के कहेंगे अच्छी पार्टी चल रही, लोग देख कर कहेंगे ये कौन आदमी है? They have to, like, you know, send you an invitation, or at least, you know, go to the front door and welcome you in, right? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पहले निमंत्रण मिलना चाहिए पार्टी के लिए और आपको सामने के दरवाजे से आपको बुलाया जाए पार्टी के अंदर। You don't just crash the party, you know. बस ऐसे तो जबरदस्ती किसी पार्टी में नहीं घुस सकते। You have to meet some qualification, isn't it? आपको कुछ योग्यता प्राप्त करनी होगी जाने से। Otherwise, you'll be like Bhaktiḥ, you know? वरना आप भक्त एडम के जैसे रहेंगे। So these are all subtleties, you know. ये सारी सूक्ष्मता। We're very gross. हम बहुत स्थूल हैं। This is problem. Yes, We're Namaste. thick, मोटी gross, मात्रा। false ego, pride, all of this thing making us very gross. मिथ्या अहंकार दम्भ ये सब हमें बहुत स्थूल बना रहा है। In spiritual world, every instruction really is just some kind of glance. और आध्यात्मिक जगत में हर तरह का निर्देश एक तरह की झलक होती है बस। Right? Can we learn everything just by a glance? क्या हम सब कुछ बस एक झलक में सीख सकते हैं? We're so thick, so gross. हम इतने So मोटे callous. दिमाग वाले हैं, बहुत जड़ दिमाग वाले हैं। So you go to the class and you're just like getting pounded, and still we don't understand it, you know? हम क्लास में जाते हैं, हमें पीटा जाता है, फिर भी हम कुछ समझते नहीं हैं। I remember one time, you know how they have these emojis, you know? Is that what it's called, right? आपको पता है एक बार जो इमोजीज So one devotee, he sent an emoji of what does it mean to come to Murali Krishna Swami's class, right? एक भक्त ने एक तस्वीर भेजी थी कि उसमें ये बताया जा रहा था कि मुरली कृष्ण स्वामी की क्लास में जाने का क्या मतलब होता है उसमें। And he had one man and he's holding on to one column, you know, like some pillar. और उसमें उस तस्वीर में था कि एक व्यक्ति ने एक पिलर, एक खंबे को पकड़ा हुआ है। And he's just going like this. He's just like crashing his head into this pillar, you know. और वो उस खंबे में अपना सर बस मारा जा रहा है ऐसे बार-बार। That's how it felt to him when he came to the class. उसको ऐसा लगा जब वो क्लास में आया था। Just like crashing my head into the pillar, you know. उसको ऐसा लगा जैसे खंबे में सर मारा है। So, you know, guru means heavy. The information is heavy. It's challenging you. It's confronting you. गुरु का मतलब उनके में वजन होता है, उनके बातों में वजन होता है, वो आपको चुनौती देते हैं, आपका सच सामने लाते हैं। The guru's trying to help you. गुरु हमारी मदद He's taking a big risk. बहुत बड़ा खतरा उठा रहे हैं वो। Mostly they'll misunderstand. ज़्यादातर लोग जो है गलतफहमी पा They'll लेते हैं, take it in the wrong way. गलत तरीके से समझते They'll हैं, get upset. वो नाराज हो जाते हैं Then they'll start blaming you for everything. और फिर वो गुरु को ही दोष डालने लगते हैं। So it's really a thankless task. असल में ये बिना किसी धन्यवाद के ये काम किया जाता है। Right? If something goes wrong, oh, it's Gurudev's fault. कुछ भी गलत हो जाता है कहते हैं गुरु की गलती है, And when something goes nicely, we say, oh, I did that. और कुछ अच्छे से जाता है तो हम कहते हैं मैंने सब सही से किया। Just see what I did, you know, when something goes nice. You know? कुछ भी अच्छा होता है तो हम कहते हैं देखो मैंने क्या किया। And usually nothing's going nice, so it's Gurudev's fault. You know? और ज़्यादातर जब कुछ अच्छा नहीं होता है तो हम कहते हैं ये सब गुरुदेव की गलती है। So it's not a nice, you know, not easy to do the seva, you know. तो सेवा करना इतना आसान नहीं है। Right? Someone has big false ego, probably they'll misunderstand you and blame you. Then why I should bother my head approaching that guy, you know? अगर किसी का मिथ्या अहंकार बहुत बड़ा है और वो हर चीज़ गलत तरीके से समझ सकता है तो क्यों उसके पास जाके उसको परेशान किया जाए, उसको कुछ भी कहा जाए करने के Or लिए, lady, या कोई महिला, Mataji, माता right? जी, Why bother my head? Why bother the head? मैं अपना सर क्यों लगाऊं वहाँ पे अपने सर? You have nothing better to do. क्या मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है? So they're trying, that's their seva. वो प्रयास कर They're रहे हैं, taking a वो सेवा big कर रहे हैं, risk, वो बहुत बड़ा खतरा उठाते हैं, confronting us, challenging us, you know, pinching us, or, you know, stabbing us. Right? तो ये बहुत बड़ा खतरा उठाते हैं गुरु, हमें हमारे मिथ्या अहंकार को बाहर लाते हैं, हमारा सच बाहर लाते हैं और हमें कई बार चाकू मारते हैं या इस
तरीके से हमारी मदद Because करें। most people, they don't like it. क्योंकि ज़्यादातर लोग को ये पसंद नहीं आता, It's like, oh, it's so disturbing. बहुत परेशान कर रहा है ये सब मुझे। Like, what's his problem, you know? इनका समस्या क्या है? Just preach, no problem. Why you're bothering me, you know? बस प्रचार कीजिए, मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? Oh, Krishna. But that's mercy. लेकिन यही कृपा है। And hopefully, like someday, like we'll catch how the Guru is trying to help us and appreciate it, और not complain about it. उम्मीद है हम किसी दिन समझ पाएं गुरु हमारे किस तरह मदद करने का प्रयास करें और उसकी सराहना करें और हम शिकायत करना बंद करें। I remember my Gurudev said, you know, sometimes the man needs a surgery on his leg, and it's so painful you cannot even touch it, you know. कभी कभी ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि आपको कोई पैर में आपको कोई सर्जरी करवानी हो और इतना दर्द है कि उसको छू भी नहीं सकते, पैर में इतना दर्द है। Like some big boil or something like this, right? It's so painful, right? कोई बड़ा फोड़ा हो गया हो पैर में तो बहुत दर्दनाक होता है वो। Even you look at it, it's painful, उसको देख के भी दर्द होता है। right? And you go to the doctor, and then he's like looking around. Does it hurt? Does it hurt here? You know? और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और सब चारों तरफ छू के दबा के कहता है दर्द हो रहा है क्या, दर्द हो रहा है क्या। And my Guru said, then you start swearing at the doctor. You're the worst doctor. You're giving me so much pain. और फिर हम डॉक्टर को गाली देने लगते हैं, कहते हैं तुम मुझे इतना दर्द दे रहे हो, तुम बहुत बुरे डॉक्टर हो। What kind of doctor are you? किस तरह के डॉक्टर हो तुम? And then somehow you knock the guy out, you know. और किसी तरह से आप उस आदमी को मार देते हैं। And then you do some nice surgery on him, you know. और फिर वो किसी तरह का अच्छा आपके ऊपर Take all सर्जरी the करता bad है stuff out. और सारा गंदगी वहाँ से निकाल देता है And you wrap it up nice dressing, you know. और बहुत अच्छे से उसका ड्रेसिंग कर देता है, पट्टी मरहम पट्टी कर देता है। And then the guy next day, he wakes up, he feels like pretty good, you know. और वो अगले दिन सुबह उठता है और बहुत अच्छा महसूस करता है सर्जरी के बाद। Still some pain is there, थोड़ा दर्द होता but है not excruciating pain. लेकिन उतना दर्दनाक नहीं होता। Then it's everything calming down. तो सब कुछ धीरे धीरे ठंडा होता है। And then the doctor comes in and the guy's like, wow, you're like the best doctor I ever had, you know. और उसके बाद जब डॉक्टर आते हैं तो कहता है आप तो सबसे दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। And the doctor says, well, you should have heard what you were saying yesterday. डॉक्टर कहता है कल तुम क्या बात कह रहे थे, मुझे तुमको सुनना चाहिए वो सब। So sometimes it's, you know, my Gurudev calls it pinching. It didn't feel like pinching. मेरे It गुरुदेव felt कहा like chopping. मेरे गुरुदेव कहा करते थे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब इनकी बातें चुभ रही हैं, लेकिन हमें तो चुभने जैसा नहीं लगता था, ऐसा लगता है हमें हलाल कर रहे हैं वो। And the most interesting thing is, my Gurudev, when he was doing like this, he like laughing the whole time. He's like having a good time, you know. और मेरे गुरुदेव की सबसे विशेष बात ये थी कि जब वो ये कर रहे होते थे वो पूरे समय हंस रहे होते थे, पूरे समय आनंद में रहते थे वो। Sometimes he'd be laughing. He start laughing at his own jokes. कभी कभी वो इतना हंसते थे अपने खुद के ही जोक पे वो हंसते रहते थे। Because he would realize what Krishna made him say, and it would catch him like this is, and then he'd start laughing at his own joke. And it was so funny. We all started to laugh at him, laughing with him, you know. वो इतना हंसने लगते थे, वो खुद के इस बात को सोच के इतना हंसने लगते थे, कृष्णा ने उनसे क्या जोक बुलवाया वो सोच कर ही वो हंसने लगते थे और हम उनको देख के हंसने लगते थे। And then like we just start laughing, you know, and like we don't even know why we're laughing, you know. We're laughing because he's laughing, you know. और हम अचानक से हंसने लगते थे, हमें पता भी नहीं चलता था हम क्यों हंस रहे हैं, फिर हम सोचते थे ओ ये हंस रहे हैं हम भी हंस रहे हैं। And then you realize this. We used to think that this laughing is like a anesthesia, you know, तब हमें समझ में आया असल में ये जो हंसी है असल में ये बेहोशी का दवाई दिया जा रहा है। like some Novocaine or something. You go to the dentist, right? It just dulls the pain, you know. जैसे आप किसी दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको थोड़े देर के लिए वो दर्द को कम करने के लिए जमा देता है, वो पता So नहीं चलता है। Krishna is very expert. Gurudev very expert. तो गुरु कृष्ण बहुत निपुण है। So he's doing the surgery, but at the same time you're laughing, you're enjoying the class, right? You don't even. Then afterward, I walk out, I'll be like, wow, what was that, you know? तो गुरु कृष्ण बहुत एक्सपर्ट निपुण सर्जन है। वो जब क्लास के दौरान हम पूरी तरह हंस रहे होते थे, बहुत सारी बातें कर रहे होते थे, लेकिन क्लास के बाद जब हम बाहर आते थे तब मुझे समझ आता था ये क्या हुआ मेरे साथ। Because it was very interesting and fascinating, and every day was like a transcendental festival कि बहुत with my रुचिकर guru, you know. और हर दिन ऐसा लगता था हमारे यहाँ उत्सव हो रहा है, वहाँ ऐसा वहाँ पे अनुभव होता था हमें। We would go on a, like taking a ride with this transcendental personality.
वो हमें एक अलग ही अनोखे सफ़र पे ले जाया करते थे, इस दिव्य सफ़र पे अपनी ये व्यक्ति। And laughing with him and enjoying with him, it was just the nectar, you know, food for the soul. और उनके साथ हंसना, उनके साथ क्लास में रहना, उनकी बातें सुनना, ये हमारे लिए बहुत अमृत जैसा लगता था। That's why I said, we didn't really mind, he can say whatever he wants to say. It doesn't even matter. इसलिए कभी हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता था, वो जो कहना चाहे वो कहें, हम बस उनके साथ रहना चाहते थे। We're just happy to be with him, just happy to hear from him, you know. हम बस खुश थे उनके साथ आसपास रहने के लिए, उनसे हमेशा I went सुनने on के the लिए। Hari-katha, the whole time he's speaking Ariya, he's not speaking English. हम कई बार उनके साथ पदयात्रा में जाते थे और पूरे समय बस उड़िया में बात कर रहे होते थे। I'm कभी sitting इंग्लिश there, बात I'm भी नहीं enjoying करते। every night, right? I'm trying to recite the verses in a real language. I don't speak a real language. और मैं जो है उड़िया भाषा में जो है श्लोकों को उच्चारण किया करता था उनके साथ में, मुझे समझ में नहीं आता था ये उड़िया भाषा क्या है, फर्क भी नहीं पड़ता था। If he's happy, Krishna's happy, we're happy. वो खुश हैं, कृष्णा खुश हैं, हम खुश हैं। It's that simple. इतना सरल है। But in the beginning, after the class, after we're all laughing and joking, we come out of the class, and all of a sudden I'd be like, oh, I feel like I went through open heart surgery or something there. शुरुआत में कई बार जब हम क्लास में जाते थे, हम हंसते थे, हम क्लास में सुन रहे होते थे और क्लास से जब हम बाहर जाते थे तब मुझे लगता था, ओ ये क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हार्ट सर्जरी हो गया। Sometimes you get the surgery, you don't feel it till the medicine is wearing off, right? कभी-कभी आप किसी सर्जरी से गुजर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चल पाता है कि आपके ऊपर सर्जरी भी हो गई है। Then I was like, wow, you know. I remember one time I came out of the class, and I felt like after you leaving the hospital, and you just had open heart surgery, and you're just going, you know, this circular door, and you're just going to catch your ride home, right? So like the first day that you're leaving the hospital after you had open heart surgery. I remember feeling this way, you know. तो मुझे कई बार ऐसा अनुभव होता था जब मैं क्लास से बाहर जाता था, तो जैसे अस्पताल से पहले दिन जब कोई व्यक्ति बीमार व्यक्ति ठीक होने के बाद बाहर निकलता है और वो जो दरवाज़ा होता है जो चारों तरफ घूमता है, उस दरवाजे से गुजर के बाहर निकलते हैं अस्पताल से, तो मुझे बिल्कुल वैसा महसूस होता था उस समय। And I was exhausted. मैं पूरी तरह थका रहता था। I'm just sitting there listening to class, right? I would leave those classes. I would like wait for a flatbed to come by and just like lay on the back, you know, take me home, you know. मैं उस क्लास में बस बैठा रहता था और जब क्लास खत्म होती थी, जब मैं बाहर निकलता मैं पूरी तरह थका रहता था और बाहर जाके मैं इंतज़ार करता था किसी तरह कोई फ्लैट बेड रिक्शा आ जाए, वहाँ पे मैं उस पर लेट के चला जाता। It was exhausting. इतना थकाने वाला वो होता था। Then I come in, then you'd eat the prasad with the devotees, and it was just like ton of rice and dal. You just like ate so much rice. I never ate so much rice in my life. I had nothing else to eat, you know. और हम भक्तों के साथ फिर प्रसाद देने जाते थे तो वहाँ पर टन राइस खाते थे सब बैठ के। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना राइस नहीं खाया था। Very simple prasad, you know. बहुत सरल प्रसाद मिलता था वहाँ खाने। A lot of rice. It wasn't exactly basmati either, you know. बहुत ज़्यादा चावल मिलता था वहाँ पे और बासमती भी नहीं था। This is a risa baba, you know. So we eat like a mountain of this rice, you know. हम ये चावल का पहाड़ बनाते थे प्रसाद के समय। I'm just exhausted after these classes, you कि हम know. क्लास के बाद इतना थक जाते थे। And just catch the rickshaw and just somehow try to make it to your room, you know. इसी तरह रिक्शा पकड़ के अपने रूम तक पहुँचना है। And just like fall on the mattress, you know. और सीधा जाके अपने गद्दे पे गिर जाते It's थे। like, what kind of class is this, you know? ये किस तरह का क्लास होता है हमारा? I was like wiped out, you know. पूरी तरह मिटा दिया मुझे Wiped क्लास out. में। I had gone to so many classes before. Why am I so wiped out like this, you know? मैं इससे पहले भी कई क्लासेस में गया, लेकिन इस क्लास में तो मुझे पूरी तरह मिटा के रख दिया। Like, what's going on in this class? All the time we're laughing and I'm like wiped out after that. ये क्लास में होता क्या है? पूरे क्लास में हंस रहे होते हैं और क्लास खत्म होने के बाद पूरे तरह से मिट जाते हैं। So that was my experience. तो ये मेरा अनुभव था। But then somehow or other he was nicely cleaning, purifying, encouraging us, and you know, making it easier for us to understand it and accept it and go through the process. किसी तरह से वो बहुत अच्छे से सफाई कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से हमारा उपचार कर रहे थे, हमें शुद्ध कर रहे थे, ताकि हम इस प्रक्रिया में बहुत अच्छे से समझ बना सकें और आगे बढ़ सकें। So I'm trying in my own way, because I saw how nicely that was working. I'm trying in my own way to do the best I can to help you to get the same type of mercy. तो मैं अपना श्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मैंने देखा, जिस तरह का मैंने अनुभव प्राप्त किया, वैसा ही अनुभव आप लोगों को लेने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि मैं भी आप लोगों को उस तरह से मदद कर सकूँ।
Then my Gurudev told me, you try to help the devotees. मेरे गुरुदेव ने कहा भक्तों का मदद करने का प्रयास करें। Just like I got help, you try to help the devotees. जिस तरह मुझे मदद मिली उसी तरह That's मैं all we're दूसरों trying को to मदद करने do. का प्रयास करूँ। यही हम करने का प्रयास Otherwise, करते why हैं। should we bother our head? Why disturb anybody? Why say anything to anybody? हम अपना सर क्यों लगाएंगे? हम किसी को परेशान क्यों करेंगे? हम किसी को कह के अपना क्यों समय बर्बाद करेंगे? Krishna's devotees, they want everyone to be happy. कृष्णा के भक्त सभी को खुश देखना चाहते हैं। When they see people suffering and disturbed, it bothers them. कोई अगर वो किसी को देखते हैं कोई दुख में है कोई कष्ट में है They तो don't वो want to परेशान see करता है। people in that condition. वो लोगों को इस दुखद परिस्थिति में देख नहीं पाते हैं। बड़ा दुखी। So they're making the unhappy people, try to make them happy by Krishna consciousness. you know? दुखी व्यक्ति को सुखी बनाना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत से। So I always tell devotees, you cannot stay in our association and remain miserable and unhappy. तो मैं भक्तों से अक्सर कहता हूँ आप इस संग में नहीं रह सकते हैं और दुखी रहकर इस संग में नहीं रह सकते हैं। I say it's not allowed. यहाँ पे अनुमति नहीं है किसी को दुखी होने का। Not allowed. अनुमति नहीं है। If you're not blissful and happy, or you don't want to be blissful and happy, then maybe this place is not for you. This is for people who are happy or want to be happy. आप अगर आप आनंदित नहीं हैं, शांत नहीं हैं, सुखी नहीं हैं, तो ये जगह आपके लिए नहीं। ये जगह उन लोगों के लिए है जो आनंदित हैं, सुखी हैं या आनंदित सुखी होना चाहते हैं। I don't want to be around miserable people. मैं दुखी लोगों के आसपास नहीं रहना चाहता। Right? Don't you want to be around positive, happy people? आप नहीं ऐसा हमेशा सुखी लोग आसपास Doesn't that make you सुखी लोग feel आसपास better रहते and हैं। inspired and like it's like more enjoyable? आप बेहतर महसूस नहीं करते, बहुत और ज़्यादा प्रेरणा और आनंदित महसूस करते हैं। तो We're सुखी लोग supposed to आसपास होते हैं। become like that. हमें ऐसा बनना है, Otherwise, what are we doing here? वरना हम यहाँ कर क्या रहे हैं? All right, so let's try to become happy people. तो चलिए हम सुखी मनुष्य बनने का प्रयास करते हैं। If we're desiring and going for this pure bhakti and trying to get Guru and Krishna's mercy, more and more, day after day, we'll become more and more peaceful, more and more happy. Undeniably so, by their mercy. तो अगर हम भक्ति करने की इच्छा कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु कृष्ण की कृपा को कैसे प्राप्त कर रहे हैं, इसका प्रयास कर रहे हैं, तो धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से हम शांत और सुखी होते जाएंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। And I feel much benefited because I'm following my Gurudev's instruction. He told me to help the devotees. मुझे बहुत फायदा प्राप्त हो रहा है क्योंकि मैं अपने गुरुदेव के निर्देश का पालन कर रहा So हूँ। this is how I can make him happy तो इस तरह से मैं उनको प्रसन्न and कर get सकता his हूँ prayers and his mercy and blessing और उनकी प्रार्थना, उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता हूँ। and try to help the devotees, share what works, share what you learned, share what you heard. That's all we're trying to do. और भक्तों का मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ, उनसे वो बांटने का प्रयास कर रहा हूँ जो काम करता है और जिसने काम किया। If this works for you and is benefiting you, then come. अगर ये आपके लिए काम कर रहा है, आपको फायदा पहुंचा रहा है, तो आप आइए। You don't like it and you're miserable or you think someone else can help you, then go there. अगर आपको पसंद नहीं है और आप दुखी हैं, आप कष्ट में हैं, आप सोचते हैं कोई और बेहतर है आपकी मदद कर सकता है, तो आप उनके लिए पीछे। Nobody forcing you to come here. कोई भी आपको यहाँ जबरदस्ती नहीं कर रहा है यहाँ आने के Is anyone locking the door, locking you in here? क्या किसी ने दरवाजा लॉक किया यहाँ? किसी ने आपको लॉक बंद This करके is रखा? he's our door guard, right? Is he locking everybody in? ये हमारे दरवाजे का रक्षक द्वारपाल है, क्या इसने दरवाजा बंद करके रखा है? He doesn't look like big tough guard, you know. He looks like ये a, बड़ा looks like तगड़ा a nice गार्ड नहीं कर रहा guy, है। nice simple soul, you know. ये सरल I आत्मा think दिख रहा है कोई। if you really wanted to leave, I think you could get by that guy, you know what I mean? अगर आप असल में यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, मुझे लगता है आप इससे बाहर निकल जाएंगे इस व्यक्ति की। I don't think he'll object, you know. मुझे नहीं लगता ये कोई रोक डालेगा, रुकावट डालेगा। He may say, why you want to go? हो सकता है वो आपको पूछेगा आप क्यों जाना चाहते हैं? This won't be good for you. आपके लिए अच्छा है ये। I'm not going to force you to sit down. वो आपको जबरदस्ती यहाँ बैठा के नहीं रखेगा। All right. Thank you, everybody. I appreciate it. We're just trying. हम बस प्रयास कर रहे हैं। You know, I'm not a scholar. What I heard, what I learned, what works, that's all I'm trying to share with you. जो मैंने सीखा, जो काम किया, वो मैं आपको बांटने का प्रयास कर रहा I हूँ। never asked to be a guru मैं कभी गुरु or बनने के लिए मैंने पूछा है, sannyasi सन्यासी or any बनने of these other things. ये सब कुछ मैंने This नहीं was पूछा। put on me, ये सब मेरे ऊपर डाला गया and I'm trying to catch up to it और मैं उसको सही से पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ to get mercy. ताकि मुझे कृपा मिल I सके। didn't ask for all of this things. मैंने इन सब चीज़ों के लिए मांग नहीं की। Try to understand me. मुझे समझने का प्रयास कीजिए।
All right? ठीक है, Thank you, everyone. Appreciate it. Grantharaj, Śrīmad-Bhāgavatam ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Guru Premananda. Oh, Mataji, you had a question. You had your hand up. I forgot. माता जी आपको कोई सवाल था, आपने अपना हाथ उठाया था, मैं भूल गया. This is going to be a quick answer, though, बहुत आपको जल्दी वाला आंसर मिलेगा, because I don't want everyone to get indigestion. क्योंकि मैं सभी को अनपच नहीं कराना चाहता. This is the risk. ये खतरा है. Hare Krishna Gurudev. So before I was thinking that I can figure out like what should I have to do or not, but finally Krishna convinced me that I am completely deaf, dumb and blind, and whatever I make the plan, it will be completely failed. But I can't distinguish between what That is sounds very mechanical. सुनने में बहुत लग रहा है मशीन की तरह बोल रहे हैं आप. I now realize I'm deaf, dumb, and blind. मुझे पता चल गया है मैं अंधे गूंगी बहरी हूँ. And whatever I try to do in Maya will definitely fail. जो भी मैं माया में करने का प्रयास करती हूँ अवश्य असफल होगा. Therefore, I have to surrender to Krishna and do pure devotional service. I am 100% understanding this. मैं 100% इस बात को समझ रही हूँ. Jai Guru. Thank you, Gurudev. Thank you, Gurudev. But लेकिन something's wrong with the computer. There's a कंप्यूटर bug. में कुछ गड़बड़ है. Did someone program a bug in there? कि प्रोग्राम That must have been Maya, right? अवश्य इसके अंदर कुछ माया है. yeah, it is. Yeah, Maya threw a bud in there. माया इनके अंदर कुछ बट डालती है. If, ands, or buts. No if, ands, or buts about it. अगर मगर किंतु परंतु यहाँ नहीं होना चाहिए. So, So like Maya is completely stolen my mind. So I can't distinguish between like what is Maya is saying or what is Krishna is saying. Like I'm completely divided. Sometimes I'm thinking maybe it is Krishna, but somehow like no, it is Maya, or I'm doing some devotional thing, but it's look like it's Krishna conscious, but somehow it is actually the Maya. Like there is complete confusion. it's a Rajagun. Yeah. Okay. बहुत Somehow I want to figure out, but I can't do it by my own. So I need your help. That's the whole point of the class. क्लास का पूरा मतलब यही था. We need mercy. हमें We कृपा realize I चाहिए. can't do it on my own. हमें समझना होगा खुद से हम कुछ नहीं कर सकते. I need to become like a beggar. I need mercy. हमें भिखारी बनने की जरूरत है. My कृपा Guru चाहिए. said, if you're proud and puffed up and you think you're great, right, you cannot beg for anything. मेरे गुरुदेव कहा करते थे अगर आप अहंकारी हैं, आप फूले हुए हैं, आप किसी चीज़ के लिए भीख कैसे मांगेंगे? Right? I'm not going to beg for mercy. हम कृपा के लिए भीख नहीं मांग Right? रहे. If it comes, it comes. अगर आता है तो आता है. It's supposed to be, humble. I need mercy. हमें तो विनम्र होना चाहिए, वो मुझे कृपा That's चाहिए. devotee's mood. ये भक्त का भाव Everything's है. based on mercy. सब कुछ कृपा पे आधारित है. Right? We even call it prasadam. यहाँ तक कि Means a प्रसाद mercy. प्रसाद ही कृपा है. So Krishna's devoted, Bhagavatam, Mahaprasad, it's all mercy. Everything is mercy. कृष्णा भागवतम प्रसाद ये सब कृपा है. Mercy and blessing. कृपा आशीर्वाद. So what is our mood and mentality तो हमारा मनोभाव, हमारी मानसिकता क्या है? and desire to get mercy? और इच्छा कि हम कृपा चाहते हैं. That's what has to be understood. There's a great science to that. ये जो हमें चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है. Not doing some drama or putting some tears or it's not like this, ये इस तरह से नाटक करके आंखों से आंसू बहा के ऐसा ये Krishna ऐसे नहीं काम knows the करें. heart. कृष्ण हमारा हृदय जानते हैं. The Guru knows. गुरु जानते हैं. Oh, this person is not serious. ये व्यक्ति गंभीर नहीं है. So we cannot fool Krishna, we cannot fool the Guru. हम गुरु को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, कृष्ण को बेवकूफ़ नहीं बना Because सकते. how can the Guru help you if he's bewildered by your bewilderment? गुरु आपकी मदद कैसे करेगा अगर वो भटक गया है आपके भटके हुए रास्ते से? So he must understand what's really happening. Otherwise, how we can, if he's blind, doesn't understand it, how he's going to explain it to you? इसलिए गुरु अगर अंधे हैं तो वो आपको समझ नहीं रहे तो वो आपकी मदद कैसे करेंगे?
So he must have right vision and intelligence. That only happens if he's connected to Krishna and Krishna paraḥ. गुरु का दृष्टि और बुद्धि सही होना चाहिए, तभी हो सकता है जब वो कृष्ण के द्वारा उनको आशीर्वाद प्राप्त है और कृष्ण से संपर्क में है। Krishna knows everyone's heart. कृष्ण सभी का हृदय जानते हैं, He knows what everybody needs. वो जानते हैं सबकी He जरूरत क्या knows है, what is your question, what is your doubt. वो जानते हैं हमारा सवाल क्या है, हमारा संदेह क्या है। So if he doesn't inform the guru, then how does the guru help you? अगर वो गुरु को बताएंगे नहीं तो गुरु आपकी मदद कैसे करेंगे? No, Gurudev, I'm fine. गुरुदेव मैं ठीक हूँ। No, you're not. नहीं, आप ठीक नहीं हैं। No, everything's nice. No, it's not. नहीं, सब कुछ ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। What do you mean? क्या मतलब? You're not happy. You're not peaceful and happy. That means something's wrong. आप खुश What's नहीं bothering हैं, you? आप खुश नहीं हैं, आप शांत नहीं हैं। Why इसका are you मतलब सब कुछ disturbed? सही नहीं है, आप परेशान क्यों हैं आप? You cannot fool Guru and Krishna. आप गुरु कृष्ण को बेवकूफ नहीं बना सकते। Right? We dress nice, we not tilak, or devotional clothes, or bead bag, right? That's not going to fool Guru and Krishna. आप अच्छे से कपड़ा पहन लेंगे, अच्छा तिलक लगा के आ जाएंगे और बीट बैग हाथ में लेके आ जाएंगे, बाहर से कृष्ण और गुरु को बेवकूफ नहीं बना पाएगा। It also says that the face is an index of your mind. कहते हैं चेहरा हमारे मन का दर्पण होता है। So the Guru is very, he knows what's happening. तो गुरु जानते हैं क्या हो रहा है असल में। He can know just by looking at you. Krishna will give him intelligence to understand something is wrong. गुरु आपको बस देख कर समझ जाएंगे, कृष्ण आपको उनको बुद्धि देंगे तुरंत, इसके व्यक्ति के साथ कुछ गलत है। But we have to also have faith and trust that this person can help you. लेकिन हमारे अंदर इतना श्रद्धा विश्वास भी होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरी मदद कर पाएगा। And that you have to be willing to hear it and accept the advice or instruction. और आपको तैयार होना होगा उनके निर्देश को, उनके सलाह को स्वीकार करने के लिए और समझने के लिए। And you cannot hide from the Guru. और आप गुरु से छुप नहीं सकते हैं। So you have to say, this is my question, this is my doubt, this is what I'm trying to understand, whatever it is. You also have some responsibility. आपका भी कुछ उत्तरदायित्व है, आपके कुछ सवाल हो सकते हैं, आपके कुछ संदेह हो सकते हैं जिसका आप समाधान करना चाहते हैं, सवाल And you जवाब have पाना to give चाहते to हैं। the spiritual master opportunity to try to answer your question and destroy your doubt. और आपको आध्यात्मिक गुरु को मौका देना होगा आपके संदेह को खत्म करने के लिए, आपके सवाल का जवाब देने के लिए। And if he's really bona fide Guru, then he can answer your question and destroy your doubt. और अगर असल में वो प्रमाणिक गुरु हैं, आपके संदेह को नष्ट करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे। If you let him, अगर आप उनको अनुमति दें। but if you want to just use it as an excuse to go into Maya, then nobody can help you. लेकिन आप बस बहाना बनाना चाहते हैं माया में जाने के लिए, तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। You already made up your mind. आपने पहले ही अपना मन बना लिया है। That's why we say sometimes even Krishna himself, if he came to preach to you, you would not be able to listen and accept it. इसलिए हम कई बार कहते हैं अगर कृष्ण खुद आके यहाँ पे प्रचार करे, हमसे कहे, तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसको समझेंगे नहीं। Because you already made up your mind. कि पहले हमने अपना मन बना लिया है। So if it's like that, who will preach to you? अगर ऐसा है तो हमें कौन प्रचार करेगा? Still the Guru will try, फिर भी गुरु प्रयास करेंगे। but if you just already made up your mind, you're not listening to anything, you're just like practically already gone, then okay, go get your experience, see how it works. तो अगर आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, आप पहले से मन कुछ बना चुके हैं और आप जाने व्यवहारिक रूप से आप यहाँ से निकल चुके हैं, तो आप जाइए करके देखिए, अपना खुद का अनुभव लेके We आइए। can learn by hearing or heavy lashes. आप सुन के समझेंगे या डंडे से? So we don't want to hear because of false ego and the crookedness, okay, then only Maya's heavy lashes can. तो अगर हम सुनना नहीं चाहते हैं हमारे Train you up. वजह से, जटिलता की वजह से, तो अब माया है जो हमें प्रशिक्षण देगी। So go get your heavy lashes. तो चाहिए अपना Go कड़ा figure it प्रहार out. झेलने Go के get लिए, humbled out. जाइए पता लगेगा, विनम्र होके आइए, Go get smashed. जाइए टूट कर आइए थोड़ा। Then maybe we'll come back like in a humble mood, like, oh, no, yeah, I got the point. Yeah, point, right? In Russia they say, yeah, I got the point. तो हम विनम्र भाव से आके कहेंगे हाँ मैं अपनी बात समझ गया, मैं समझ गया मेरी बात। Right? Krishna was trying to tell Arjuna. Arjuna didn't want to listen. कृष्ण अर्जुन को बताना चाहते थे, लेकिन अर्जुन सुनने को तैयार नहीं थे। He's acting like conditioned soul. वो बद्ध जीवात्मा के जैसे वहाँ पे काम करके दिखाया। And Krishna didn't force instruction onto him. He said, okay, you figure it out. और कृष्ण ने जबरदस्ती उनको कोई निर्देश नहीं दिया। कृष्ण ने कहा And when पता लगाइए पहले, he tried every last thing, और उसने हर आखिरी चीज जब and प्रयास कर nothing लिया, worked, कुछ भी काम नहीं आया, materially or भौतिक spiritually, या आध्यात्मिक रूप से,
Then he admitted his defeat. तो उसने अपनी हार मान ली। Then he said, now I'm a soul surrendered unto you. तब उसने कहा मैं आपको पूर्ण रूप से I want to शरणागत हूँ, become your shishya. मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। Then Krishna chastised him and said, yeah, you were bewildered basically, तो कृष्ण ने उनको थोड़ा डांटा कि आप पहले तो पूरी तरह भ्रमित हो, bewildered by Maya and bodily concept of life. माया के और शारीरिक चेतना की वजह से पूरी तरह भ्रमित हो, You're mourning for that which is not worthy of grief, उस Krishna चीज के लिए said. शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। So Prabhupada said that Krishna chastised Arjuna, तो प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण ने अर्जुन को डांटा पहले, purified him. उसको शुद्ध बनाया, Then he instructed him, तब उनको निर्देश दिया, step by step. कर्म कर्म। And Arjuna just kept saying, I have this doubt, I have this doubt, please kill this doubt. And then Krishna as a bona fide guru just smashing all of the doubt. और अर्जुन ने बार बार उनको पूछते रहे, ये मेरा संदेह है, ये मेरे शंकाएं हैं, और कृष्णा प्रमाणिक गुरु के रूप में उनके सारे संदेह और Now सारे प्रश्नों not का उत्तर दिया। haunted, not distracted, not disturbed, now you're more peaceful, now you can listen to some philosophy. तो अब आप और ज़्यादा शांत हैं, अब आप किसी सिद्धांत और निर्देशों को सुनने के लिए अच्छे से तैयार हैं और ज़्यादा शुद्ध हो गए हैं। Okay? ठीक है। One thing I also want to add, like a person like me, I'm kind of very self-centered. I always think What? like self-centered, like I, me, myself, you always say. So how can I be humble? Like I really want to change myself, become humble. But like, Listen. सुनिए पहले। My father, he used to say about one of my sisters, you know, he used to say, she's not a listener. मेरे पिताजी हमेशा एक मेरी बहन है उनके बारे में कहा करते थे, इसको सुनना नहीं आता है, कैसे सुना जाए। She's nice, वो अच्छी है, but she's not a listener. लेकिन उसको पता नहीं कैसे सुनना है। So while he's trying to instruct her, she's talking at the same time. और जब वो उनको निर्देश देने का प्रयास करते थे, उसी वक्त वो जो है बोलती भी रहती थी। And father will say, guru will say, she's not a listener, she's not listening. और पिता या गुरु कहेंगे ये इसको सुनना नहीं आता है, Listening to the mad mind and she wants to be heard. अपने पागल मन को सुनती है और वो चाहती है सभी इसको सुने। So she's not being humble, यानी कि विनम्र नहीं हो she's रहे, not really trying to understand, असल में समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, so not nice listening because of false ego. अच्छी तरीके से सुन नहीं रहे हैं इस मिथ्या अहंकार की वजह से। And pride, she thinks she already knows everything, और इस दंभ में वो सोचती हैं कि वो सब कुछ जानती हैं, so nobody can tell her anything. कोई भी इनको कुछ कह नहीं सकता। So, you know, you can't talk and hear at the same time, तो आप एक ही समय में बोल और सुन नहीं सकते हैं। right? The Guru Krishna already knows what is your question. He already knows what is your problem. गुरु कृष्ण पहले ही जानते हैं आपका सवाल क्या है, आपका समस्या क्या है। To be really honest with you, Srila Govinda Swami, very rarely did he say, you know, any questions. तो अगर आपको ईमानदारी से बताऊं तो श्री गौर स्वामी महाराज ने कभी मुश्किल से कभी कहा होगा किसी को कि किसी का कोई सवाल है, Especially in Bhubaneswar. विशेष करके He भुवनेश्वर, never asked, does anyone have any question? कभी उन्होंने पूछा ही नहीं किसी को किसी को Because सवाल है, Krishna made him tell you everything you needed to hear. क्योंकि कृष्ण ने उनको सब कुछ बताया जो भी आप सभी लोगों को सुनने की जरूरत है। And then you try to raise your hand, Gurudev is like, put your hand down. Listen. और कोई अपना हाथ उठाने का प्रयास करता है, गुरुदेव कहते अपना हाथ नीचे रखो, सुनने का पहले प्रयास करो क्या कह रहे हो। It was amazing. And it's really true because any question I had, I just pray to Krishna, Krishna, how do I understand this point? Please kindly, you know, let Gurudev explain to me. And every class, Gurudev explained it to me. I saw that every day. और ये बहुत अद्भुत था, हमने प्रतिदिन रोज हमने ये देखा, जो भी मेरा कुछ सवाल था मैंने कृष्ण परमात्मा से अपने हृदय में प्रार्थना किया, मैं इस चीज़ को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, ये मेरा सवाल है, ये मेरा संदेह है, और गुरु कृष्ण के रूप में कृष्ण गुरु के साथ प्रकट होकर मेरे सारे सवाल का जवाब दिया उन्होंने, और ये प्रत्येक दिन हुआ हमारे साथ वहाँ। And many things he's reading in different pastimes and philosophy, naturally some questions, some doubts, some confusion will come up in you if you didn't hear that before. कई बार कुछ चीज़ें नई चीज़ें वो हमें बता रहे होते थे, कुछ लीलाएं कुछ कहानी बता रहे होते थे, कुछ सिद्धांत कुछ तत्व बता रहे होते थे जो हमने पहले कभी सुनी नहीं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे कुछ सवाल उत्पन्न होते थे, हमारी कुछ शंकाएं उत्पन्न होती थी सुनकर। Sometimes it felt like some new philosophy or something. कभी कुछ सुनने में लगता था कुछ नया ही सिद्धांत बताया जा रहा है, नया तत्व बताया जा In रहा है। beginning, when Gurudev would say something, I say, where does Prabhupada say that, do you know? शुरुआत में जब गुरुदेव ऐसे कहा करते थे, मैं सोचता था कि प्रभुपाद ने ये सब बातें कहाँ कही है, ये सब चीज़ें।
because I was reading Prabhupada's books, I had faith in Prabhupada, right? So I heard some new thing. I'm like, well, I didn't remember Prabhupada saying like this. तो मैं प्रभुपाद की किताबें पढ़ता था, मुझे प्रभुपाद के अंदर श्रद्धा थी, तो मुझे याद नहीं आ रहा था प्रभुपाद की किताबों में ये सब चीज़ें कहाँ लिखी है, मैंने कभी पढ़ा नहीं ये सब चीज़ें। Then I would just like little bit have doubt, you know. मुझे ऐसा थोड़ा संदेह होता था। And all of a sudden, Gurudev many times would just look at me and say, yeah, Prabhupada says right here. और कई बार गुरुदेव मेरी तरफ सीधे सीधे देख के कहते थे, ये देखो प्रभुपाद ने यहाँ कहा है ये चीज़। किताब के अंदर लिखा के कहते थे। Yeah, Prabhupada says right there, you know. Then he opened the Shastra and says right there. It's in this, and then he read like one line or one paragraph, and everything was exactly explained what he was just saying. और तुरंत ही वो शास्त्र खोलते थे, दिखाते थे प्रभुपाद ने, और वो एक लाइन पढ़ते थे प्रभुपाद की किताब से या एक पैराग्राफ पढ़ते थे और बताते, और तुरंत यहाँ पे वो सारा चीज़ मिल जाता था जो मेरा सवाल है। And I never saw that before. और मैंने ऐसा पहले I कभी never देखा नहीं understood था। that before. मैंने पहले कभी उसको समझा ही नहीं था। Yeah, it's right there. उन्होंने कहा ये यहीं पे सीधा यहाँ पे। Sometimes I would go home like, where? You know, I would be like, where is that? कभी-कभी मैं घर I जाके gotta देखता था। see this for myself, you मैं खुद know. देखूं, मैंने कहा कहाँ था ये, कहाँ बताया प्रभुपाद ने। And I would like really like double check everything, like how was it like this? और फिर मैं And all जाके of a sudden दोबारा it's like right there, you know, like right in front of my face. It's like slapping me in the face right there. और मैं घर जाके जब दोबारा चेक करता था वही चीज़, मैं खुद से देखूंगा कहाँ ये चीज़ बताया। जब मैं खोल कर दिखता था तो तुरंत वहाँ से वो बाहर ऐसा निकलता, ऐसा लगता मेरे मुंह पे तमाचा मार रहा है वो उठ के। So I stopped this, you know, where does it say that in Prabhupada's books, you know? It's not the right attitude, you know. तो मैं सही बर्ताव रवैये में नहीं था, फिर मैंने ये करना बंद कर दिया कि If कहाँ you have प्रभुपाद ने a ये सब बातें question, क्योंकि then ask. Humble state of mind, you know. अगर आपको सवाल है आप ऐसे विनम्र भाव से पूछ सकते हैं। Not like prove it, you ऐसा know. नहीं कि साबित करके दिखाओ कहाँ है ये। So I had to make some adjustments there, you know. तो मैंने थोड़ी व्यवस्थित किया अपने आप को थोड़ा। Then later he would say something I didn't hear before. I would just read Prabhupada's books and look for where Prabhupada said exactly the same thing. Because truth is truth. और बाद में कभी ऐसी चीज़ें मुझे मिल रही होती थी जो मैंने कभी सुनी नहीं प्रभुपाद की किताब में, तो फिर मैं जाकर प्रभुपाद की ग्रंथ पढ़ता था और फिर वही चीज़ें मुझे प्रभुपाद की ग्रंथ में सीधे सीधे मिल जाती थी, क्योंकि सत्य तो सत्य है। I remember when I left Grihastha ashram and I started preaching, traveling and preaching in Vanaprastha. मुझे याद है जब मैंने गृहस्थ आश्रम छोड़कर मैंने सफ़र करना, प्रचार करना, यात्रा करना शुरू किया। And when I started preaching, especially in ISKCON temples, और मैं जो है इस्कॉन मंदिरों में विशेष करके जब मैं प्रचार कर रहा था, I was telling many things that Srila Govinda Swami explaining, teaching to me. और मैंने वो सारी चीज़ें बताना शुरू की लोगों को कि श्री गौरव महाराज ने क्या सिखाया मुझे, क्या पढ़ाया मुझे। And one devotee said, you see, you know, Maharaj, I wasn't Maharaj, but you see Maharaj, you know, nobody knows really your guru. तो मुझे एक भक्त ने कहा, महाराज कोई असल में आपके गुरु को जानता नहीं है, They know only Prabhupada. सभी लोग प्रभुपाद को जानते हैं। And many of them, they're like Ritviks. They only have faith in Prabhupada. और कुछ लोग तो ऋत्विक थे, उनको तो बस प्रभुपाद में ही विश्वास था, किसी में। Even they may be initiated by some other guru, really, their faith is in Prabhupada. हो सकता है वो किसी तरह से उन्होंने दीक्षा ली थी किसी गुरु से, लेकिन असल में उनका श्रद्धा प्रभुपाद के ऊपर। So they won't listen to what you're saying because you're quoting your guru. लेकिन इसलिए वो उन चीज़ों मेरी बातों को सुनते नहीं थे क्योंकि मैं अपने गुरु की बात बता रहा हूँ। And they don't necessarily understand about parampara and truth is truth and all of that. They only know Prabhupada. और वो ये नहीं समझते थे कि असल में परंपरा क्या है और सत्य तो हमेशा सत्य होता है, वो बस प्रभुपाद जानते थे। So then I realized that I have to do a lot of research and find everything my Guru Dev was teaching me. I have to find where Prabhupada says the same thing. तो मैंने तब मैंने अनुभव किया कि मुझे ये सारी चीज़ें खोजबीन करनी होगी, जो भी मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया, ये सारे प्रभुपाद की शिक्षाओं, प्रभुपाद की किताबों में मुझे ये सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। So I spent really years studying Prabhupada's books, and every time I found some tattva that I heard from Srila Govinda Swami, I would write it down. I would save it. और मैंने कई साल अपना इसमें लगाया, इस खोजबीन करने में कि जो भी मैं श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़ता था और जब भी मुझे वो चीज़ें मिलती थी जो मुझे श्रील गोविंद स्वामी महाराज ने कुछ तत्व सिखाए हैं, तो मैं उसको लिख लेता था उन सारे तत्वों को। Krishna paraḥ, they'll say exactly the same thing. They're all saying the same thing. कृष्ण परंपरा हमेशा एक ही चीज़ बताएंगे। But it's easier for them to accept it from Srila Prabhupada. लेकिन उनके लिए ज़्यादा आसान था श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। Because it's a question of faith. क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है। So if you can deliver that same truth, but
through Srila Prabhupada, then these persons who came and follow Prabhupada, they'll more appreciate and accept that same instruction. तो अगर आप वही सत्य प्रभुपाद के माध्यम से इन लोगों को बताएंगे, क्योंकि वो प्रभुपाद की वजह से यहाँ पर आए और प्रभुपाद का वो एक निष्ठता से पालन कर रहे हैं, तो इस बात की ज़्यादा सराहना करेंगे जब वो इस बात को सत्य को सुनेंगे. So I had to learn that. I had to adjust. If I really want to influence and impact and give this information, I have to give it from Prabhupada. तो मैं इस बात को समझ पाया, अगर मुझे किसी तरह का प्रभाव डालना है, किसी तरह का इनके ऊपर प्रभाव छोड़ना है, तो मुझे असल में ये प्रभुपाद के माध्यम से करना होगा. So if you show your faith in Srila Prabhupada and you explain from Prabhupada's books and teachings, then these people will more readily accept it from you. और अगर आप प्रभुपाद के ऊपर अपनी श्रद्धा, प्रभुपाद की किताबों, उनकी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को बता पाएंगे, तो लोग उसको ज़्यादा आसानी से स्वीकार कर पाएंगे और सराहना कर पाएंगे. So almost overnight, I adjusted the way that I was preaching. पूरे रात से ही मैंने अपनी तरीका बदल लिया, अपने आप को व्यवस्थित करने का, अपने प्रचार करने का तरीका बदला. And when I went to Moscow, I went to the first place I went there in Moscow, they're all Ritviks. और पहली बार जो मैं जगह गया मॉस्को में, वहाँ पे सारे लोग ऋत्विक थे. They don't want to hear anything but Srila Prabhupada. वो प्रभुपाद से कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे, प्रभुपाद के अलावा किसी और को सुनना भी नहीं चाहते थे. So I know what I want to say that I learned from my guru, so I just prepared everything from Srila Prabhupada's books and teachings. और मुझे पता था मैंने अपने गुरुदेव से क्या सीखा है, और मैं पूरी तरह तैयार था श्रील प्रभुपाद की शिक्षा और उनकी किताबों से उनको वही शिक्षा देने के लिए. And that's what convinced them. और ये उनको आश्वस्त That's how they came. और इसी तरह से वो आ गए. Because they saw this person has so much faith and understanding from Srila Prabhupada's books and quoting with understanding and realization from Prabhupada's books and teaching, that convinced them. क्योंकि उन्होंने देखा इस व्यक्ति के अंदर श्रील प्रभुपाद के किताबों और उनकी शिक्षाओं में इतनी ज़्यादा समझ है, इतनी ज़्यादा श्रद्धा है, तो इस बात ने उनको भी आश्वस्त कर दिया, जो मेरी श्रद्धा और मेरी समझ और मेरे साक्षात्कार श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं में और उनके किताबों में. Then later I could explain how I got so much faith and how I learned all of that in Prabhupada's books and teachings from my spiritual master, Srila Bhāgavata Purāṇa. और बाद में फिर मैंने उनको सिखाया, उनको बताया कि कैसे मुझे यह सारी शिक्षाएं मेरे गुरु श्रील गौर स्वामी महाराज के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की किताबों और उनकी शिक्षाओं में प्राप्त हुई. Because before that I was reading Prabhupada's books every day for years and years and years. I thought I already knew Prabhupada. मैं श्रील प्रभुपाद की किताबें कई सालों से घंटों बैठ के पढ़ा करता था, क्योंकि मैं सोचता था मैं प्रभुपाद को जानता हूँ. That's why when Gurudev would say something that I didn't hear or read before, I would immediately be like, where's that in Prabhupada's books? इसलिए मेरे गुरुदेव कभी भी कुछ ऐसा कहा करते थे जो मैंने पहले कभी पढ़ा नहीं, पहले कभी मैंने सुना नहीं प्रभुपाद की किताबों में, तुरंत मैं सवाल उठाता था, ये प्रभुपाद की किताबों में ऐसा कहाँ लिखा है? Because my faith had not completely developed. क्योंकि मेरा श्रद्धा पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था उनके. And that's why Gurudev is always quoting authority. Otherwise, why should you just accept what I'm telling you? इसलिए गुरुदेव हमेशा जो है आधिकारिक रूप से बात किया करते थे, हमेशा शास्त्र कोट करते थे, क्योंकि वो कहते थे आपको मुझे सुनने की क्यों जरूरत है? It must be authoritative. बस ये किसी शास्त्र आधार होना चाहिए. One time I was the chairman of the GBC. He was chastising me. He's not happy with me. You know. एक बार एक GBC के चेयरमैन मुझे डांट रहे थे, वो मुझसे खुश नहीं थे. And I said, Maharaj, like, what's the problem? I don't understand. I'm preaching Guru Sadhu and Shastra, and I'm quoting Srila Prabhupada. What's the problem? तो मैंने महाराज से पूछा समस्या क्या है? मैं गुरु साधु शास्त्र से प्रचार कर रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद ने जो कहा है वही कह रहा हूँ, आपकी समस्या क्या है? And he said, yes, you're preaching, you're quoting Prabhupada. मैंने कहा हाँ, तुम प्रभुपाद की बातें बता रहे हो. But we're also quoting Prabhupada. हम भी प्रभुपाद की बातें बता रहे हैं. But you're not quoting what we're quoting. लेकिन तुम वो नहीं बता रहे हो जो हम बता रहे हैं. What is this? ये क्या है? So you're admitting I'm quoting Srila Prabhupada. I should have said, well, why you're not quoting what I'm quoting? वो इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि मैं प्रभुपाद की बातें बता रहा हूँ. मुझे उनसे सवाल पूछना चाहिए था कि आप वो क्यों नहीं बता रहे जो मैं बता रहा हूँ. I didn't think of that at that time. उस समय इसके बारे में सोचा नहीं. I was still trying to be humble. मैं थोड़ा विनम्र होने का प्रयास कर रहा था. But I was amazed. Yes, you're quoting Prabhupada. But you're not quoting what we're quoting. कि हाँ आप भी प्रभुपाद को कोट कर रहे हो, लेकिन आप वो नहीं कोट कर रहे जो हम कोट करते हैं.
So they say, oh, Prabhupada said like this. I say, yeah, but Maharaj, you left out the second part of the sentence. वो कई बार कहते थे प्रभुपाद ने ऐसा कहा है, फिर मैं उनसे कहा था आपने दूसरा सेंटेंस तो छोड़ दिया प्रभुपाद ने, इसके बाद क्या कहा था? Or paragraph, or chapter, or whatever, right? या आधा पैराग्राफ या आधा अध्याय बताया, पूरा नहीं बताया। प्रभुपाद की बात है। So first they're saying what I'm speaking is deviated, is deviant philosophy. पहले शुरुआत में उन्होंने कहा कि आप जो बता रहे हैं ये अलग अलग सिद्धांत बता रहे हैं, अलग तत्व बता रहे हैं आप। So I said, what is deviant? What am I saying that's not Guru, according to the authorities, Guru Sadhu Shastra? तो आपको ऐसा क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ जो है जो मैं गुरु साधु शास्त्र के आधार पे नहीं कह रहा हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ जो मैं विचलित तरीके से बता रहा हूँ? And then I said, give me one thing that I'm saying that's not accurate, 100% accurate. एक चीज़ बताइए मुझे जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सही नहीं है, साबित And करके। they could not say anything. और वो कुछ भी नहीं कह पाए। Then later they were criticizing me and say, you know, why does Murali think that he's saying something that we're not saying? और बाद में उन्होंने मेरे ऊपर ये दोष दिया कि वो क्यों नहीं कह रहे हैं मुरली कृष्णा जो हम कहते हैं। So now, they're saying the same thing I'm saying. अब वो ये कह रहे हैं कि हम भी वही कह रहे हैं जो वो भी कह रहे हैं, एक ही बात हम दोनों कहते हैं। So then I asked him, I said, so does that mean we're both deviant and we're saying the wrong thing? तो मैंने उनसे फिर सवाल पूछा, इसका मतलब हम दोनों ही या तो भटके हुए हैं या तो हम दोनों ही सही चीज़ बताते हैं। So they don't know how to respond to this type of question. तो इस तरह के सवाल वो कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। One other big personality, I said, he used to be like my friend, I said, Maharaja, what's the problem? I'm speaking Guru Sadhu Shastra. मैं एक और बड़े व्यक्तित्व से मिला, वो मेरे मित्र के रूप में थे। फिर मैंने उनसे पूछा, महाराज मैं गुरु साधु शास्त्र से बात कर रहा हूँ, आपकी क्या समस्या है? And he said, well, I'm also speaking Guru Sadhu Shastra. मैं भी गुरु साधु शास्त्र कह रहा हूँ। But the problem with you is when you speak Guru Sadhu and Shastra, everyone wants to leave their guru and come and follow you. लेकिन तुम्हारी समस्या ये है कि जब तुम गुरु साधु शास्त्र कहते हो, सभी लोग अपने गुरु को छोड़ के तुम्हारे पास चले जाते हैं। So I didn't know if that was a compliment or I was confused. What does that mean? तो मैं थोड़ा भ्रमित हो गया, ये मुझे मेरी सराहना कर रहे हैं या कि मेरा So if we're both speaking same thing, but they're getting more faith in what I'm saying, then that means I'm doing good thing, right? तो अगर हम दोनों एक ही चीज़ बात कर रहे हैं और अगर लोगों को मेरे अंदर ज़्यादा श्रद्धा मिल रही है, इसके मतलब मैं सही चीज़ कर रहा हूँ। No, because my disciples are going to you instead of me. This is the problem now. अब मेरे शिष्य मेरे को छोड़ के तुम्हारे पास जा रहे हैं, ये समस्या है। I'm losing pranami. मेरा प्रणामी कम हो रहा है। And because of that, I'm losing also my prestige. और इसके वजह से मेरी प्रतिष्ठा भी कम हो रही है। When you lose your pranam and pranami, then you lose your prestige also, right? जब वो प्रणामी खत्म होने लगेगा तो प्रतिष्ठा भी कम हो जाएगा। So anyway, I better stop. I don't want to get in too much trouble here, because this is not politically correct. Just like when you go to Russia, you don't talk about Stalin, You can get in big trouble. So thank you everyone very much, appreciate it. Shri Gaurita ki, Srila Prabhupada ki, Srila Bhāgavata Swami, Srila Gurudeva ki, Samaveda Bhakta Brinda ki, Gaura Premanande! Somebody said, are you related to Jayapataka Swami? किसी ने मुझसे पूछा कि आप जयपताका स्वामी से संबंधित हैं? I said, yeah. मैंने कहा हाँ। He's my father. He's my uncle. I said, he's my uncle. वो मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी हैं। And they're like, yeah, I can see the resemblance, मैं देख सकता हूँ, दोनों एक जैसे लगते हैं बहुत। I said, yeah, he's my uncle. मैंने कहा मेरे चाचा हैं वो। Then after that, everyone's like, Jayapataka Swami is his uncle. और सब लोग उसके बाद कहने लगे जयपताका स्वामी इनके चाचा जी हैं।
They would be like being a little careful now अब लोग मेरे से थोड़ा सावधान रहते हैं because he's my uncle. क्योंकि वो मेरे चाचा हैं He's my spiritual uncle. मेरे आध्यात्मिक